So, good afternoon, I think, and I hope I am audible. We are here to start the second class of Modern India. ठीक है भाई. We are here to discuss 7 questions, and those 7 questions, and we will start them one by one. I want to read out these 7 questions so that everyone should have idea that how we are going to go ahead with it. Question number 1. The Revolt of 1857. The Revolt of 1857 led not to the downfall but to the consolidation and permanence of our empire in East. Examine. It means it's a statement of, it was given by a British politician at that time, I guess, that he says that Revolt of 1857, it did not lead to the downfall of the British Empire. It led to the consolidation and permanence of the British Empire. One more statement related to it. It was eye-opener for both, for British and for Indian. We'll see how it is. Question number 2. What do you understand by the commercialization of Indian agriculture? What's commercialization of agriculture? Discuss its impact on Indian society and economy during the British time. ये चीज क्या है? What is this commercialization of agriculture? And what's the impact of this on Indian economy and Indian society? Third, the decline of handicraft traditional industries. या तो उनको handicraft कह लें, we can also call them traditional industries, was the direct result of the British rule in India and had mostly negative consequences on India. जो हमारा डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज था, हैंडीक्राफ्ट्स था, इट वॉज ड्यू टू ब्रिटिश रूल. They did not died out naturally. It's not that like telephone PCOs were replaced by mobile phones or cyber cafes were replaced by our SIM cards or cassette was replaced by CD and CD was replaced by USB. ऐसा नहीं है. It was, or they ended in a very pre-planned way via government policies. So we'll discuss this and we'll make a chart, a diagram or a table where we will understand how British economy proceeded. That will help us to answer such questions. तभी इन सवालों का उत्तर सही मिलेगा. Otherwise, in economics of British India, I have seen that students only write the drain of wealth and British came and they have drained us, or wahi rhetoric. So we'll move away from rhetoric and we'll try to have the understanding how British economy really worked. Fourth question. The last decade, next 2 questions are also related. The last decade of 19th century and first decade of 20th century was the time of strengthening of communalism in India. 19th or 20th century का जो turn है, that has strengthened communalism in India. More than that, we also trace the history of communalism. So this is where the communalism took its one of the early steps in the modern sense. Fifth question. The growth of Indian business class in the later half of 19th century and earlier half of 20th century was not because of colonial rule, but despite of it. Again, at the turn of century, Indian business classes started. A lot of cotton mills. Then you must have heard about Tata Steel, Iron and Steel, Godrej, Birlas. So they grew. इनका जो डेवलपमेंट हुआ, was this helped by British rule?
और they were given road blocks by British rule. ब्रिटिश रूल ने इनको पुश किया, या ये अपने स्ट्रगल से ब्रिटिश रूल के बावजूद भी इंडस्ट्रीज बना पाए. Their capitalism was because of British rule or despite of British rule? ठीक है. Sixth question, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. इसको आप उत्तर नहीं दे पाए तो फिर आपने कुछ नहीं पढ़ा. तो जिसने बिपिन चंद्र भी पढ़ा होगा. द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज एज मच फॉर द गुड एडमिनिस्ट्रेशन एज इट वॉज फॉर ब्रेकिंग द बैक ऑफ बंगाली नेशनलिज्म. जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, इट वॉज ऑल्सो फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो फॉर ब्रेकिंग द बैक ऑफ बंगाली नेशनलिज्म. तो दोनों के लिए है. Seventh, the decade of 1920s, which began with the hope of Hindu-Muslim unity. The decade of 1920s, which began with the hope of Hindu-Muslim unity, ended with the deep divisions between the two. एक decade जो शुरू हुआ, हमें लगा, we thought there will be great Hindu-Muslim unity. Hindus will help Muslims in Khilafat movement. Muslims will also jump into the boat of nationalism. Both will create a joint front. तो जो लखनऊ पैक्ट की होप थी, after लखनऊ पैक्ट there was the discussions between Gandhi and Ali brothers, and then Congress has supported Khilafat movement. Muslims also supported the nationalist cause of Congress. So in this hope, the decade of 1920s started. But how it ended? Congress 1928 rejecting the separate electorate, the main demand on which Muslim League was founded. Iqbal in 1930, Allahabad, has called for a separate nation. So this is how we'll move into this class, and let's start from question number 1, that's about 1857. इसको शुरू करते हैं. The Revolt of 1857. The Revolt of 1857. Now, first understand कि before 1857, which sections or class of Indian society was against British and which class and section of Indian society was in the support of British. देखिए, हर चीज के लिए समझ लें. You need to simplify every topic. And you need to have some basics right. जैसे आप देखेंगे, whenever a ball comes, तो बॉल जो बॉलर फेंकता है, that can be a bouncer, can be a yorker, but batsman has a basic stance. वो एक stance बना के अपना खड़ा होता है. And at the last moment he improvise. ऐसा नहीं है कि बैट्समैन makes a guess, कभी इधर खड़ा हो गया, कभी उधर खड़ा हो गया. तो every topic you must have some basic stance. रिवोल्ट ऑफ 1857 में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवोल्ट? वॉज इट अ म्यूटिनी? वॉज इट अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वुड हैव बीन सक्सेसफुल? ये सब जो कई सारे विचार हैं. दिस रिवोल्ट ऑफ 1857 डिड अ ग्रेट हेल्प टू ब्रिटिश एम्पायर. 1857 वॉज अ बून इन डिस्गाइज फॉर ब्रिटिश एम्पायर. ब्रिटिश एम्पायर जो कंपनी को नहीं खत्म कर पा रही थी, 1857 ने खत्म करवा दिया. ऑल्सो 1857 came as a shock for both parties. 1857 में जो ब्रूटैलिटी हुई, उस पे there is a view of some parliamentarian in House of Lords. House of Lords में एक स्टेटमेंट है
किसका है तो मुझे याद नहीं, शायद पिट का, पता नहीं किसका है, पील का है या किसी का है. ही सेज कि इफ सच ब्रुटैलिटी, जो ब्रिटिश ने ब्रुटैलिटी की, 50-60 हजार लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया. इफ सच ब्रुटैलिटी वॉज नीडेड, आई पिटी ऑन द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वी वर डूइंग इन इंडिया. अगर इस तरह की क्रूरता की जरूरत थी तो हम वहां पता नहीं क्या कर रहे थे. इफ सच ब्रुटैलिटी वॉज नीडेड, आई पिटी ऑन आर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया. And if such brutality was not needed, I am appalled on the brutality, needless brutality done. अगर जरूरत थी तो वहां कर क्या रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन 100 साल से, और नहीं थी तो इतनी ब्रुटैलिटी की जरूरत क्या थी. So therefore there can be hundreds of view on 1857. हमारा बेसिक स्टैंस क्या होगा? What we should remember by heart, रट क्या लेंगे उसी को यूज करना है. The classes of Indians which were against British and the classes of Indians which were in the support of British. So first thing you should remember for any question for 1857. दूसरा याद रखेंगे, what is the administrative system before 1857 and what's the administrative system after 1857. Remember these two tables for 1857. ये दो टेबल आप बाय हार्ट कर ले. This will help you remember everything related to 1857 or whatever that revolt is. तो देख लें, what are the classes which were against British. एक क्लास जो हमेशा इनके अगेंस्ट रही. द रीजन वॉज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. 1857 के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी है. ईस्ट इंडिया कंपनी दैट वॉज अ कंपनी, अ प्राइवेट एंटरप्राइज, नॉट वेरी प्रॉफिटेबल. ऑल्दो फ्रॉम 1833 ऑनवर्ड्स इट वॉज solely administrative company, solely an administrative body, lost its commercial job. कॉमर्स तो कुछ बचे ही नहीं था. पर टी थी, वो भी कितनी बिकती थी इंडिया में 1830s में. टी इन्होंने उगाई ली थी असम में, तो टी भी कोई बहुत बड़ी चीज थी नहीं. इट वॉज नॉट अ बिग डील. इट वॉज सोली एडमिनिस्ट्रेटिव, स्पेशली आफ्टर दैट सेंट हेलेना एक्ट ऑफ 1833. However, the greatest headache for this East India Company was their recruited soldiers who could never be satisfied, because East India Company adopted a style of semi-mercenary. Oh, I'm sorry, आप अगर ये समझे कि they were not mercenary, soldier mercenary नहीं थे, hired soldier नहीं थे, but still these soldiers were not kept in tight discipline as later British India has kept them. Soldiers were drawn largely from three regions. One is from UP, high caste Hindus जिनको पुरबिया बोलते थे. One is the traditional Muslim fighting classes, Pathans and all, जो खान होते थे. And third are the Tilange from the region of Telangana, जो तेलुगु स्पीकिंग होते थे. तो पुरबिया, तिलंगे और जो खान मलिक होते थे. Now British always allowed them to have their own traditional system of army. जैसे वो मर्सनरी आर्मीज में रहते थे वैसे ही वो यहां रहते थे. So in this case the soldiers were more than eager to revolt. Whenever at the drop of hat they revolt. लड़ जाते थे, बिल्कुल आपस में ही लड़ लेते थे और यूनिटी भी बनाते थे. Sometimes they come together and they have done the mutiny, very famously Vellore mutiny 1806, when William Bentinck was the governor of Madras. Madras का governor था. It was thought after mutiny his career is over, but as luck will have it 22 years later he will return as Governor General of India. तो Vellore mutiny हुई. बैरकपुर mutiny, बिंदी तिवारी has organized बैरकपुर mutiny 1824. They were brutally crushed, brutally. वेल्लोर में तो फिर भी जस्टिफाइड था.
बैरकपुर में तो इट वॉज इनजस्टिफाइड क्रशिंग। और फिर 1857 की म्यूटिनीज, वेयर ऑल द बैरक्स फ्रॉम दमदम टू दिल्ली, तो कलकत्ता से दिल्ली तक की सारी बैरकें रिवोल्ट में खड़ी हो गई। सो दैट वॉज अ क्लास विच वॉज ऑलवेज अगेंस्ट द ब्रिटिश। दीज आर or not are their soldiers or sepoys. Soldiers always remains against. We are talking about against. Second, the class which always remained against the British, obviously, Indian kings. They were the greatest casualty of British Empire. ब्रिटिश एम्पायर की सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो थे वो ऑब्वियसली इंडियन किंग्स थे। लेटर दीज किंग्स विल बी टोटली सबॉर्डिनेटेड, एज वी नो द पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन। उनको सबॉर्डिनेट करा गया। पहले तो सबॉर्डिनेट डिवीजन, दे केप्ट डिवाइडेड। फ्रॉम 1921 दे वर केप्ट एट सबॉर्डिनेट यूनियन, जिनको चैम्बर ऑफ प्रिंस बना के they were used as the counter block of nationalism. Nationalism के अगेंस्ट उनको यूज किया गया, बट इट ऑल केम आफ्टर 1857. यही इस आंसर क्वेश्चन का आंसर है कि हाउ दीज क्लासेस हु वर अगेंस्ट द ब्रिटिश वर लेटर यूज्ड बाय ब्रिटिश। आप क्लास याद कर लो, ऑल दोज क्लासेस हु वर अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये जो अपन लिस्ट बना रहे हैं, हाउ दे विल सपोर्ट, दे विल बी द ग्रेट पिलर्स ऑफ ब्रिटिश। सेकंड देखें, जो किंग्स थे दे वर क्लियरली अगेंस्ट द ब्रिटिश, अब तो लड़ते ही थे उनसे। थर्ड, किंग्स पे तो आई थिंक इट्स नीडलेस फॉर मी टू डिस्क्राइब कि वाई दे वर अगेंस्ट। कोई भी एक राजा जो है दूसरे एम्पायर को पसंद नहीं करता है। थर्ड, द क्लास ऑफ इंडियंस हु वर अगेंस्ट द ब्रिटिश, it was लैंडलॉर्ड्स। यहां लैंडलॉर्ड से मुराद, या फ्रॉम लैंडलॉर्ड आई डू नॉट मीन द लैंडलॉर्ड्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। देयर इज टू डेफिनेशंस और टू टाइप ऑफ लैंडलॉर्ड्स। जैसे मैं आपसे कहूं जेंटलमैन, तो जनरल पार्लेंस में तो एवरीवन इज जेंटलमैन, but in sports, especially cricket, gentleman was a technical term used for non-professional players. तो आप देखें 1964 तक द ग्रेटेस्ट स्पेक्टिकल ऑफ इंग्लिश क्रिकेट वाज जेंटलमैन वर्सेस प्लेयर्स। अब आज अगर किसी से बताओ कि जेंटलमैन वर्सेस प्लेयर्स, तो ही विल थिंक समथिंग एल्स, बट जेंटलमैन मींस नॉन प्रोफेशनल क्रिकेटर्स। प्लेयर्स मींस दोज हु अर्न फ्रॉम दैट स्पोर्ट, जो पैसे के लिए अपना साइड चेंज कर लेते, कभी यॉर्कशायर कभी नॉटिंघमशायर। लाइकवाइज जमींदार और लैंडलॉर्ड इज ऑल्सो यूज्ड कलोक्युअली, जनरली, एंड ऑल्सो यूज्ड टेक्निकली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लैंडलॉर्ड्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड्स ऑफ यूपी बिहार रीजन। द ब्रिटिश लैंड पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी, दे वर द ग्रेट कैजुअलिटी। वो लैंडेड मैग्नेट्स होते थे, एलीट होते थे सोसाइटी के। दे वर द वन हु टेक द टैक्स एंड सेंड दैट टैक्स टू एवरी एम्पायर, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, मुगल एम्पायर हो, मौर्यन एम्पायर, गुप्त मौर्यन तो नहीं सॉरी गुप्ता एम्पायर हो, राजपूत हो, नो मैटर हु यू आर, यू हैव टू डील विद दीज पीपल। इन अर्ली सल्तनत द हिस्टोरियंस राइट, राय, रंका, रावत, खुत, मुकद्दम, चौधरी, दीज आर लैंडेड एलीट। गांव के लैंडेड लैंडलॉर्ड हैं, एलीट है। नाउ एवरीथिंग विल बी डन विद देयर हेल्प। आज भी इवन इन 2020 एसपी जाता है गांव में तो इनके घर में बैठता है, इन्हीं के घर में वो रुकेगा, गाड़ी रोकेगा, एंड देन दे विल गिव हिम वेरी गुड नाश्ता, जो वो जलेबी मंगवाएगा और घी के परोठे आएंगे, एंड दे विल ईट एंड देन दे विल गो फॉर द इंस्पेक्शन। सो स्टिल दे रिफ्यूज टू बज, स्टिल दे आर द elite of the village society. So from landlord I mean those zamindars, those
लैंडेड मैग्नेट्स, लैंडलॉर्ड्स और लैंडेड रूरल एलिट्स। फोर्थ, दोज हु रिमेन अगेंस्ट, तो ये तो ऐसा फैक्शन है हु डिड नॉट चेंज द साइड। इट वॉज द रियल पीपल हु हैव बोर द बर्nt ऑफ एंटायर ब्रिटिश राज। आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास, इफ गांधी, पटेल, नेहरू, बोस, जिन्ना, लियाकत अली खान, ये सब लोग आपसे बताए ना कभी आके कि ब्रिटिश हैव मेड अस पुअर एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, तो ठीक है, बट इन पर्सनल लेवल दे आर रॉन्ग, दे आर लाइंग, दे आर रिच पीपल। अकबर इलाहाबादी राइट्स अबाउट मोतीलाल नेहरू, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। सो टू से दे आर द वंस हु the real weight of British Empire was bore by the peasants of India, the tribals of India. These are really the two sections who were the coolies of British Raj, जिन्होंने ब्रिटिश राज के वेट को उठाया है। बाकी सब आउट ऑफ देयर लार्ज हार्टेडनेस, आउट ऑफ देयर एनलाइटनमेंट, आउट ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, आउट ऑफ देयर लव फॉर कंट्री, वो तो ठीक बात है, उनकी कॉन्शियसनेस थी कि दे कुड अंडरस्टैंड द नेगेटिव्स ऑफ ब्रिटिश राज। या एक आध बार कभी 5 स्टार होटल गए तो वहां लिखा देख लिया डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, शिमला की रोड पे लिखा देख लिया डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, तो वहां ईगो हर्ट हो गया। या कभी ब्रिटेन गए तो वहां पे ट्रेन से उतार दिए गए, ये सब एक आध तो इवेंट आई कैन अंडरस्टैंड, बट रियली देयर लाइफ वॉज इंप्रूव्ड बाय ब्रिटिश राज। पेजेंट्स एंड ट्राइबल्स आर द टू सेक्शंस without any doubt whose life have seen the real fall in the quality of life. तो सच में तो यही दो हैं जिनको अधिकार है ब्रिटिश राज के बारे में कुछ कहने का, बाकी सब छोड़ें। सो दीज आर peasants, soldiers, kings, landlords and peasants. These are the 4 classes which came together. यहां किंग से माइनर किंग भी है, कुंवर सिंह भी हमारे किंग ही माने जाएंगे। सो दीज आर द 4 क्लासेस। जैसे आप देखें लैंडलॉर्ड्स, दे हैड द प्रॉब्लम विद द सेटलमेंट डलहौजी वाज अबाउट टू इंट्रोड्यूस called summary settlement. New NCERT mentioned this. Summary, SUMMARY, summary settlement. Summary settlement was converting landlord regions of UP and Bihar into महलवारी system. उनको महलवारी system में वो change कर रहा था, और many महलवारी region were to be changed to रेवतवारी. So therefore these landlords have revolted. यहां तो ये बात समझ लें. Then there are classes who supported British राज, जिन्होंने ब्रिटिश राज को 1857 में भी सपोर्ट किया, करते रहे. फर्स्ट तो है वेरी क्लियरली द न्यू राइजिंग मिडिल क्लास. चाहे लक्ष्मी नरसू चेट्टी को ले लें, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे, एंड लिस्ट कैन गो ऑन एंड ऑन. दे नेवर ट्रूली, याद रखें, दे नेवर ट्रूली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम ब्रिटेन दैट 1857 में जो आपने किया दैट्स रॉन्ग. यस, नो डाउट, इन प्रिंसिपल दे वर अगेंस्ट ब्रूटैलिटीज. ये वैसे ही है जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो और हम कहें वॉर इन एवरी ऑफ इट्स फॉर्म इज रॉन्ग, द वायलेंस इज रॉन्ग. आप देखें जेपी दत्ता हैज मेड अ मूवी बॉर्डर. एट द एंड ऑफ द सीन, आखिरी जो सीन है, दैट इज
एवरीवन इज सेड, इवन द विनिंग पार्टी सेड। ये तो बात ठीक है, ये आपकी इंडिया में एक्सेप्ट कर ली जाएगी। वॉर खत्म हो पाकिस्तान से और आप कहें कि क्यों इंसान इंसान का दुश्मन है, वाई मेन किल ईच अदर, तो यहां तक तो बात ठीक है। उसी तरह दे हैव इन प्रिंसिपल सेड दैट इट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू, ये रॉन्ग है, ऐसे है वैसे है, इतना वायलेंस नहीं होना चाहिए। बट इट्स नॉट दैट दे हैव clearly said that British should not have sided with India. It's only after 1857 war when British started criticizing everything Indian, started despising every Indian. They stopped bringing their families into India. There was a great psychological change. William Dalrymple has wrote a book called White Mughals, where he tells ki how before 1857 British were a lot of British stayed in India. आज आप देखें 2020 छोड़ दें, we were conscious, हम जिंदा थे 2000 में, year 2000. Many of must have seen or remember, पता नहीं आप लोगों ने किया, मुझे याद है 50th anniversary of independence. मतलब I have a memory, I was in early school, सेकेंड और थर्ड क्लास में। 50 years ब्रिटिश ओनली वेंट अवे फ्रॉम इंडिया फॉर 50 years, 50 साल पहले तक ब्रिटिश थे। यू रोम इन टू दिस एंटायर दिल्ली, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड इवन सिंगल ब्रिटिश रेजिडेंट। एक टॉम ऑल्टर छोड़ दें और एक वो रस्किन बॉन्ड और दो चार और ऐसे ही आदमी, यू विल नेवर फाइंड एनी ब्रिटिश इन इंडिया, दे ऑल हैव लेफ्ट। ऐसा कहीं नहीं होता है। The reason is 1857. After that, they did never saw India as any potential home, तो छोड़ दो, any potential place to live. That was the mistrust and racism. एक चीज आप लिख लें, याद कर लें, if you ever have to give the example of racism. देखो, I know I am going slow. The reason is that I want to take a lot of question. बाद में मैं इस क्वेश्चन को बता ही दूंगा इसमें क्या लिखना है। In 18th century, British called Indians as natives. Natives, यहां के रहने वाले। 19th century, they started calling Indians as कूली, बोझ उठाने वाले, कुलीज। जब भी शिकार पे जा रहे हैं, वो कंपनी बहादुर, तो पीछे कुली जाते थे उनके। Whenever they used to go somewhere, तो कुलीज, because they have, Indians have almost surrendered, subordinate position पे थे। It's very much like I come to a new class, जैसे मैं पढ़ाने जाऊं कहीं, and I am introduced as a teacher, मैं क्लास में देखूं और फिर मैं बाहर निकल के कहूं कि students of Bangalore are very well behaved, या people of Bangalore are very well behaved। तो मुझसे पूछा जाए क्यों भाई, how you know people of Bangalore are very well behaved? मैं कहूं क्लास में बच्चे कितने चुपचाप बैठते, तो यार तुम टीचर की तरह इंट्रोड्यूस किए गए थे, दैट्स व्हाई यू थिंक दे आर वेल बिहेव्ड। एक बार मीट देम विद इक्वालिटी, जाके सीट पे पीछे बैठो स्कूल में 11th 12th में, तो आपको समझ में आएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ वेल बिहेव दे आर। तो दे फ्रॉम इन 19th century दे स्टार्टेड कमिंग इंडिया क्लियरली एज कॉन्करर्स, एज द मास्टर्स ऑफ आवर डेस्टिनी। तो उनको लगता था कुली है, खाली भोजा उठाते हैं। And by 20th century, they started calling us nigger. What's up, nigger? Nigger means the Negro, the racially incapable barbarian. So see how racism is on the rise. अगर ब्रिटिश एम्पायर में रेसिज्म ना होता, if British Empire would have been devoid of racism, believe me, our nationalism would not have got that much of the steam. क्योंकि जो लीडर्स ऑफ नेशनलिज्म थे, they were most hurt by this racism, वो इस रेसिज्म से हर्ट थे, क्योंकि वो पढ़ लिख गए थे और उनको वो इक्वालिटी नहीं मिलती थी जो चाहते थे। देखो, इफ यू आर अ पुअर मैन, गरीब आदमी हो, तो आप इंडियन दरोगा के सामने भी माई बाप और अन्नदाता बोलोगे, और कंपनी बहादुर भी आपका अन्नदाता है। देयर इज नो डिफरेंस, आपका ईगो नहीं हर्ट हो। बट वेन्स यू आर लर्नेड, वेन्स यू आर लिटरेट,
and then anyone will ask you, सब कोई बैठा है, सब पढ़े लिखे, आपसे कहा गया मेट्रो में, अरे हेलो गेट अप, सिट देयर, और जमीन पे बैठो जाके. नाउ दैट विल हर्ट. कैरेज में आपसे कहा गया डोंट सिट हेयर, पीछे पीछे जाके सामान के साथ, या नीचे बैठो, जमीन पे बैठो. And that happened with Gandhi. So this hurts the entire pride. मोतीलाल नेहरू, मसूरी में एक रोड थी, उस पर लिखा होता था dogs and Indians are not allowed, and any Indian walking on that road has to pay 25 पैसे, 25 पैसे, चवन्नी, एक चाराना, which was not worthless, जिसका कुछ वेट होता था. Every morning walk he used to go with 50 पैसा in his hand. 50 पैसे वो जेब में डाल के जाते थे. जाते समय while going he used to get that चालान डन, वो पर्ची कटवाते थे, लौट के आते थे तो भी वो पर्ची खुद ही जाके कटवा लेते थे. And he always made sure that he walk on that road. That's why so rich barrister jumped into Indian nationalism. However, by 1857, this middle class was not in the support of mutiny. They were the great supporters of British Raj. Dada Bhai Naoroji wrote the book Un-British Rule in India. जो इंडिया का रूल है वो कितना अन-ब्रिटिश है. यू हैव टू मेक इट मोर ब्रिटिश, उसमें इक्वालिटी लानी पड़ेगी. सेकेंड, द मर्चेंट क्लास. मर्चेंट क्लास, दिस इज ऑल्सो ग्रेट सपोर्टर ऑफ इंडियन नेशनल मूव, great supporter of British Raj. It's only after the phase of mass movement and when economic nationalism will appear, जब economic nationalism appear हो जाएगा, तो these merchant class will support nationalism, and a theory of Sumit Sarkar that this merchant class always wanted to keep our independence movement up to a limit. They never wanted to go it anarchical. वो anarchical हो जाए ऐसा नहीं चाहते थे. आप अभी करोल बाग के व्यापार और जो मार्केट लगा है करोल बाग का, इसमें जाओ और यू डिमांड गुड सैनिटेशन फॉर शॉपकीपर्स की, या टॉयलेट्स बने शॉपकीपर्स के लिए, दे विल सपोर्ट. आप ये कहना शुरू करो टॉयलेट नहीं बने तो आग लगा दूंगा पूरे मार्केट में, दे आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू. So merchant class was always the supporter of British Raj at this point. Later they became the supporter of nationalism movement in the phase of mass movements. वो भी आगे supporter बनेंगे जाके. Third class which supported the British Raj, there are not so many classes, but you will see all the urban class. Indian, we shall call it, I am not going to call working class, it's Indians in bureaucracy. Higher or lower, they largely remained loyal till the end of British Raj. ये लॉयल रहे, they have done their job. In India there were never more than 3.3 lakh British. 3.5 लाख से ज्यादा, और 3.3 लाख ब्रिटिश से ज्यादा इंडिया में कभी ब्रिटिश रहे नहीं है. एंड वी वर मोर देन 30 crores, वी रीच 30 crores. तो यही भगत सिंह लोगों का, सूर्यसेन का कहना था कि एक एक थप्पड़ भी एक एक ब्रिटिश को मारने लग जाओ, जो पड़ोस में उसको बस एक चांटा मार दो. And if every Indian will do, they will run off. ऐसा हो ही नहीं सकता, they can stay in India. So Indian British Raj was greatly supported, their pyramid was greatly supported by a huge base of Indians in bureaucracy. So 4 classes in their support and 4 classes against them, 3 classes supporting them. अब आप देखें how it became the permanence. These soldiers, after 1857, the company rule was taken. It was given to British Empire. British Empire came and reorganized the army. By 1857, there were 2 types of army. One is the regular company army. Another is the British Indian Army sent as the force.
जो हेल्पिंग फोर्स है। अकॉर्डिंग टू कंपनी सोल्जर्स दे आर द ऑक्सिलरीज। कंपनी को लगता था, हमारे कंपनी सोल्जर्स को यह क्लेम था कि वी आर द कंपनी सोल्जर्स एंड दे आर द ऑक्सिलरीज। बट इट वॉज अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। वो टेक्निकली तो ब्रिटिश, सॉरी डिफैक्टो तो ब्रिटिश एम्पायर ही कंट्रोल करती थी। तो ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स ऑलवेज हैड द हायर रोल्स। कंपनी ऑफिसर्स ऑलवेज गिवन द सबऑर्डिनेट रोल, वेरी मच लाइक यू कैन अंडरस्टैंड एज इंडियन आर्मी एंड बीएसएफ। इंडियन आर्मी और बीएसएफ में चाहे जितनी इक्वालिटी की बात आप हम नहीं ज्यादा जानते हैं, बट द इंटरनल पॉलिटिक्स इज वेरी डीप एंड बिटर। अब बीएसएफ जवान इज ट्रीटेड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द रेगुलर कंपनी सोल्जर एज पर माई इंफॉर्मेशन। आई मे बी रॉन्ग, तो मैं भैया ये नहीं कह रहा हूं कि अलग अलग है वो, बट देयर इज सम डिफरेंस। कुछ पेंशन वेंशन का आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, बट आई हैव हर्ड कि दे आर ट्रीटेड डिफरेंटली। तो जो सोल्जर्स थे नाउ द इन 1860s इट वाज स्ट्रीमलाइंड, एवरीवन बिकेम द सोल्जर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसको एसिमुलेट करने में एक व्हाइट म्यूटिनी और हुई थी आफ्टर 1857 एंड 1860s। दैट व्हाइट म्यूटिनी वाज व्हेन कंपनी ऑफिसर्स डिक्लाइंड टू सर्व अंडर द इक्विवेलेंट ऑफिसर्स। अब कंपनी कर्नल से कहा गया यू विल रिपोर्ट टू ब्रिटिश कर्नल, यू आर हिज सबऑर्डिनेट। तो उसने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैं भी कर्नल वो भी कर्नल। सो ड्यू टू दिस, ऑल्दो देयर वाज अ म्यूटिनी, बट दे सोल्जर्स they became the loyal of British India. The army reorganization made army totally loyal and subordinate to British India. This army was made non-political. इसको non-political बनाया गया. They were kept in cantonments. पहले भी cantonment थे, सिकंदराबाद और ये सब, but they were properly arranged in cantonments. They were made non-political. Next is their recruitment was changed. Recruitment system was changed. Now they are not recruited from these traditional Hindu and Muslims. They are now recruited from the martial races. तो it was high time of Darwinism. तो ये हुआ कि recruitment जो है वो martial races से किया जाए। तो सिख, यादव, राजपूत, जाट, पठान, गुरखा, they became the main fighting forces rather than these traditional fighting force who were too much political in their behavior, जो अपने behavior में काफी political और जिनकी consciousness बड़ी high होती थी, जरा सी बात पे वो उखड़ जाते थे। तो recruitment was changed. Next you will understand that how these soldiers were well preserved. जैसे आप देखें अकाली मूवमेंट ऑफ 1920s, the base of entire army was the Sikh soldiers. तो अकाली मूवमेंट की सक्सेस का एक ग्रेट रीजन था कि सिख वर वन ऑफ द मेन कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो इतना सॉलिड कॉम्पोजिशन सिख का था that to keep the army non-political. और 1946 में जैसे ही म्यूटिनीज भड़की, they ran away. Reason was army was, देखो लास्ट में आर्मी ही है। एक मेरा स्टूडेंट पूछ रहा था सर what if I don't show my license? तो मैंने कहा ट्रैफिक पुलिसमैन विल कॉल द जनरल पुलिस, दिल्ली पुलिस। वो उसको नहीं दिखाओगे, लड़ोगे उससे, तो ही विल कॉल सम हायर सोल्जर, वो सॉरी हायर पुलिसमैन, एसपी आएगा। एसपी से भी आप अगर जीत गए, नहीं लड़ पा रहा एसपी, तो एसपी विल कॉल द जो ये दंगा रोकने वाली होती पैरामिलिट्री और समथिंग, सेंट्रल पुलिस, सीआईएसएफ, वो भी रोक पाएगी। देन दे विल कॉल द आर्मी। अब आप आर्मी को भी हरा ले गए, तब आपको लाइसेंस नहीं दिखाना है। वॉट आई वॉन्ट टू टेल इज कि वेन एवर द थिंग गोज आउट ऑफ हैंड, द लास्ट रिसोर्ट इज आर्मी। आर्मी ही आखिरी में आती है। उसको हराए बिना आप कोई भी चीज इंडिया में नहीं कर सकते, कहीं पे भी नहीं कर सकते। सो आर्मी वॉज केप्ट वेरी पीसफुली एट वेरी डिफरेंट प्लेस। सो देयरफॉर आर्मी वॉज अपीज्ड और दे वर केप्ट। That resulted in the permanence. These kings, the great enemies of British Raj, were subordinated. From 1858, they were promised
that no new annexation or useless annexations will take place. 38% of the India till the end remained under princely states. कोई जरूरत नहीं है. They have subordinated them. In 1877 there was a Delhi Darbar where they were all made lords and earls of British Empire. नाम तो उनको नहीं दिया गया एक तरीके से. Queen Victoria became the Empress of India. कैसरे हिंद बना दी गई. Everyone came, bowed down in front of her, put their swords and turban, मुकुट और जो पगड़ी वगड़ी सब रखी पैरों पे. And Indian kings have accepted कि now we are in a hierarchy. अभी कोई enemy वाला concept खत्म हो गया. It's not that Queen Victoria or her army wants to encroach upon our lands. अब तो हम उनके loyal servant हो गए हैं. तो बस like an SP will never encroach the power of daroga. SP rule with the help of daroga. SP तो daroga की हेल्प करता है. उसी तरह we are now the loyal subordinates of Queen. Now we are, अब तो हम आपके साथी हैं. This continued till 1921. This time is called, or this policy is called the policy of subordinate isolation. सारे किंग्स को सबऑर्डिनेट रखा गया बट आइसोलेट रखा गया. जैसे आइसोलेशन का ये एक तरीका था कि वेरियस गन सल्यूट्स विल बी गिवन टू देम. किसी को 7, किसी को 9. हाईएस्ट एन इंडियन कैन गेट इज 21. आपने भी अगर सुनाओ 21 तोपों की सलामी. गवर्नर जनरल वाइस रॉय विल गेट 51. क्वीन और किंग विल गेट 101. इंडियन को हाईएस्ट 21 है. 21 तोपों की सलामी मिलेगी. दिस हैज क्रिएटेड अ टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन द किंग्स. आपका क्या वैल्यू है, आपका क्या स्टेटस है ब्रिटिश एम्पायर में, ये वो बताता है कि सेरेमोनियल गन सल्यूट्स कितने हैं. अच्छा, एक बात याद रखें, गन सल्यूट्स में गन जब दगती है तो उसमें शेल नहीं होता है. स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर वो जब गन ब्लो करते हैं तो वो गोला गिरता कहां पे. तो भैया गोला नहीं गिरता है, वो शेल उसके अंदर नहीं होता है. इट्स नॉट विद शेल की कहीं 100 बम दाग दिए किसी गांव में गिरे जाके वो ऐसे ही दाग देते हैं. दिस इज वन एग्जांपल ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन. वन मोर आई वांट टू गिव कि यू मस्ट हैव सीन रेलवेज. तो ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने ब्रॉड गेज बनवाया, प्रिंसली स्टेट्स में नैरो गेज बनवाया, सो दैट इन एनी return of 1857 like event or any mutiny or any war, they should not be able to use their railway carriages into the British India. वो अपनी रेलवे कैरिज ट्रेन लेके ब्रिटिश इंडिया में घुस ना सके. That's why princely states were generally given narrow gauge and British India kept the broad gauge. अब सब कुछ स्टैंडर्ड गेज का शायद कर रहे हैं चेंज. Everything is going to be standardized. The reason is all the railways should go everywhere. बट उसका मेन कारण यह था कि दैट प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश दे शुड नॉट बी एबल टू, एटलीस्ट प्रिंसली स्टेट शुड नॉट बी एबल टू यूज द ब्रिटिश रेलवे लाइंस टू रन देयर ट्रेन्स एंड मोबिलाइज इन ड्यूरिंग द वॉरफेयर. तो ये जो ये चीज है, दिस इज पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन. फ्रॉम 1921 to 47 ऑब्वियसली टू यूज दीज किंग्स एज द काउंटर बैलेंस. नेशनलिज्म के कारण, नेशनलिज्म अपने राइज पे था. यहां 1921 इसलिए लिखा बिकॉज इट वॉज गिवन इन द एक्ट ऑफ 1919 विद इफेक्ट ऑफ 1921. तो जो आया इफेक्ट में 1921 है. दिस पॉलिसी इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट यूनियन, वेयर दे वर गिवन द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस. जब भी कभी आप पार्लियामेंट का टॉप व्यू देखोगे, इंडियन पार्लियामेंट जो अभी कल तो इनॉग्रेट कर दी मोदी जी ने नई, जो अभी एग्जिस्टिंग इंडियन पार्लियामेंट है, व्हेन यू विल सी द टॉप व्यू, इट हैज 3 हॉल्स. उसमें 3 हॉल बने हुए हैं. सेंटर में 3 बड़े हॉल बने हुए हैं. द रीजन ऑफ दीज 3 हॉल्स ऐसे यूं गोल है. 1 हॉल, 2nd हॉल, 3rd हॉल. 1 was Central Legislative Council, which is our Lok Sabha. 2nd was Council of States, Provincial वो जो काउंसिल है वो, this is called Rajya Sabha. And 3rd was Chamber of Princes, tricameralism, which is called Narendra Mandal. Today it is nothing but the library. कहते हैं वरुण गांधी यहां बहुत जाते हैं. लाइब्रेरियन का इंटरव्यू आया था एक दिन.
सो दिस इज द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन. जो भी है, रिमेंबर द टर्म सबऑर्डिनेट. द ग्रेटेस्ट एनिमीज ऑफ एम्पायर वर मेड देयर ग्रेटेस्ट सबऑर्डिनेट्स. द वन हु ऑलवेज रिमेन लॉयल ऑफ द ब्रिटिश राज. आज भी उनके लड़के बच्चे कहते हैं कि ब्रिटिश ने हमारे साथ कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा. इंडिया ने तो प्राइवेट प्रेस खत्म कर दिया 20 साल में. तो ब्रिटिश वंस केप्ट द प्रॉमिस. हरकोर्ट बटलर कमीशन आई थी 1927 में. इट हैज प्रॉमिस्ड कि पैरामाउंसी विल नेवर बी ट्रांसफर्ड टू एनी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. हम जब इंडिया छोड़ेंगे तो आपको आजाद कर देंगे, आपका जो मर्जी है. सो दीज किंग्स दे वर ऑल्सो मेड लॉयल. तो क्वेश्चन याद रखें कि हाउ दिस एम्पायर इज मेड परमानेंट. लैंडलॉर्ड एंड लैंडेड एलीट्स, those who were the enemies, they were not very much made as a class loyal, but उनका क्लास ही चेंज कर दिया गया. क्लास ऐसे चेंज कर दिया गया कि आफ्टर 1857 you will never see a great agrarian reform taking place. देखो एक चीज आप जान लें, you must know and remember कि एक बार रिफॉर्म, जैसे अभी ये फार्मर्स प्रोटेस्ट है, if this farm bill did not came now, it will never come. No party, ऐसे population control. संजय गांधी was very adamant on population control. They lost 1977 election. उन्होंने लेसन ले लिया, भैया population control करनी वरनी है नहीं. Why to take our government in danger for population control? After 1857, British reformist zeal almost died down. But Lord Curzon एक आया था रिफॉर्मिस्ट जील लेके. फॉर 6 years he has introduced many reforms, but he was also made a villain in our history and he did something of villainy. वो थोड़े उसमें विलन था भी. But a reformist Lord Curzon who was nicknamed nigger lover, उसका निकनेम था nigger lover. And लॉर्ड लीटन और रिपन भी आए थे रिफॉर्म लेके. बट देन यू विल सी कि रिफॉर्मिस्ट जील of Bentinck and Dalhousie, it has died down. वो died down हो गई. So you will see no new reform was introduced. Our agrarian region continued as they were. Reform नहीं किया. रेवतवारी, महलवारी, मनसबदारी, रेवतवारी, महलवारी और जमींदारी, they continued as they continue. कोई बहुत रिफॉर्म नहीं किया because these landlords and landed elites, they remained calm. Peasants, they remained the enemy. ये तो रहे enemy. However, they were not supported by rising nationalism. It's only during the Gandhian phase they got the national support. तो जो 3 classes थे at least, these 3 classes from enemy were made the subordinates. ये इस question का आंसर है. And then you will see कि how their loyalty was strengthened. इनकी loyalty और strengthen की गई. For middle class, their political aspirations were given by 1861 Act. Then a garb of democracy, a pseudo-democracy was introduced, where everyone can aspire. बाद में this became the undoing. एक ये भी क्वेश्चन है, the reforms of 1857, reforms introduced after 1857 ultimately became the undoing of British Empire. But 90 साल एम्पायर चल ली, वो भी हाई एज ऑफ नेशनलिज्म में बहुत है. 1861 Act, it's introduced. Later we will see how this provided the new avenues to our middle class. So middle class, which started from cultural reforms, Brahm Samaj, Prarthana Samaj, Satyasodak Samaj types. From cultural they became educational and social. सोशल बने भारतवर्षीय ब्रह्मो समाज, साधारण ब्रह्मो समाज, कि भाई सीधी सीधी सोशल बातें करो. प्रार्थना समाज, फ्रॉम परमहंस सभा वो प्रार्थना समाज बन गई. तो फ्रॉम कल्चरल दे बिकेम सोशल. पहले सिर्फ कल्चरल बातें, रिलीजन की बातें, अब डायरेक्ट सोसाइटी की बातें, लाइक ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैज डन. एंड फ्रॉम सोशल देयर न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस एज हैपेंड. 1860s and 70s they became political. They started working as pressure group की डायरेक्ट लोगों को तो जो रिफॉर्म कराना है करानी, गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज करना है कि डू दिस. सो दिस मिडिल क्लास which were their loyalist were tried to made more loyal.
एंड दे रिमेन्ड लॉयल टिल वर्ल्ड वॉर वन। ऐसा नहीं कांग्रेस बनते उनकी लॉयल्टी खत्म हो गई, दे रिमेन्ड लॉयल टिल वर्ल्ड वॉर वन। तो इनकी लॉयल्टी को और इंक्रीज किया गया। दे वर गिवन रूल ऑफ लॉ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स बनाई गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड, 1860 आईपीसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ये रूल ऑफ लॉ इंप्रूव होगा। मर्चेंट क्लास, ऑन देम द रिफॉर्म्स आर डाइकोटोमस। ऑन वन हैंड रेलवेज बनाया गया, मार्केट्स वर यूनिफाइड, बट ऑन द अदर हैंड ये क्वेश्चन आगे आएगा जो 6th क्वेश्चन पढ़ा ना, बिकॉज और डिस्पाइट इंडियंस इन ब्यूरोक्रेसी, फॉर देम provincial services were created, more jobs were Indianized as British Empire has increased their reach। अब भाई थाना खुलेगा किसी गांव में जाके, रेलवे स्टेशन जाके खुलेगा तो उसमें ब्रिटिश थोड़ी ना बैठे। एक एसपी के नीचे 10,000 इंडियन काम कर ही रहे हैं। तो इंडियंस इन ब्यूरोक्रेसी दे वर गिवन ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सरकारी नौकरी का जो ये वो है पढ़ाई का, जो बच्चे पढ़ते हैं, माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल मी कि व्हेन ही वाज चाइल्ड, उनका तो पढ़ाया जाता था, बट इन अदर सेक्शंस ऑफ विलेज वो जो अपने फ्रेंड्स के साथ होते थे, तो इफ सम फ्रेंड इज स्टडीइंग, जो दूसरी कास्ट के होंगे, दूसरे कुछ होंगे, वो तो देयर पेरेंट्स और देयर ओल्ड ग्रैंड मदर्स यूज्ड टू से कि पढ़ लिख के कौन कलेक्टर बनना है, ये पढ़ाई लिखाई करके कुछ कर नहीं पाओगे। हाउएवर slowly and slowly these British jobs, these bureaucratic jobs, because British started giving jobs by taking exams। उसके पहले एग्जाम ऐसे नहीं होते थे। मनसबदार बनने के लिए इम्तिहान नहीं देना पड़ता, ऐसा नहीं कि रिटन टेस्ट होता था, उसमें अकबर लिस्ट निकालते थे और लेटरल एंट्री कराते थे। इट्स नॉट लाइक दैट, बट ब्रिटिश आर द वन हु स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग द एग्जाम्स, एग्जामिनेशंस, हर चीज का। अब तो हर चीज का एग्जाम है यार, हर चीज का। कुछ मंत्री नेता भी एग्जाम से ही बनेंगे। सो द ग्रेट एवेन्यू ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन फॉर लोकल मैन, कॉमन मैन। मतलब बिल्कुल गांव के गरीब का लड़का भी जाके सीधे डीएम बन सकता है। दिस अपॉर्चुनिटी इज गिवन बाय ब्रिटिश। सो द ओपन कंपटीशन, मैं ये नहीं कर रहा हूं आईसीएस की बात नहीं कर रहा हूं, आईसीएस इज स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। First Indian to break into it was Satyendranath Tagore, and he spent 2 years in Cambridge preparing for exam। 1861 में गए थे, 63 में निकाला था। तो any family who can afford his son to stay in Cambridge for 2 years preparing for an exam, living expenses आज 2020 में unimaginable है। So I'm not talking about the highest ICS, but lower bureaucracy exam, जो जितने lower exam है सब open for Indians, so their loyalty also increased। but last में इसमें आप लिखेंगे however these classes, एक चीज जो आपको याद रखनी है, that these classes, जो एक क्लास आपने लिखे हैं, the dichotomy reversed, last चीज and then I'll move, the reversal of dichotomy, reversal of dichotomy। Kings, landlords, सोल्जर्स छोड़ देते हैं। They were against ब्रिटिश राज। लिटरेट मिडिल क्लास supporter of British Raj। Then the great schism appeared in middle class ने बाद में जो आज आप देख रहे हो, देखो जैसे जैसे मीडिया बढ़ता है, एज मीडिया स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, अभी क्या हम लोग इन लाइफ ऑफ वी आर लिविंग इन द टाइम्स ऑफ सोशल मीडिया, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक। आप देखें जैसे ये आता है देयर इज पोलराइजेशन। जितना मीडिया बढ़ाओगे उतना पोलराइज, जितना कहने का जितने मुंह होंगे उतना कम्युनलिज्म बढ़ेगा, पक्का है बात। When this new printing started, printing press इंडिया में आना शुरू हुई, these middle class started writing against the British। तो ब्रिटिश न्यूज़पेपर पिक द ब्रिटिश व्यू, जो बिल्कुल आज पोलराइजेशन। आप एनडीटीवी देखो, आप समझ जाओगे क्या बोल रहे होंगे।
जी रिपब्लिक भारत देख लो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा रिपब्लिक भारत क्या बोल रहे हो। यू टेल मी ए न्यूज, आप मेरे को एक इवेंट बता दो कि ये सर ये इवेंट हुआ है, आई टेल यू द व्यू ऑफ एनडीटीवी एंड रिपब्लिक भारत ऑन दैट। किसान प्रोटेस्ट में दोनों क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं? भारत बंद हुआ था 8 तारीख को, एक ने कहा भारत बंद हो गया 100%, एक ने कहा 0%, आज तक वाले बोले 50-50। सो दिस मिडिल क्लास इन 1860s एंड 70s के बाद इट स्टार्टेड बिकमिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, और बाय वर्ल्ड वॉर 1 तो दे बिकेम टोटली अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, वेयर एज द किंग्स एंड लैंडलॉर्ड दे बिकेम द सपोर्टर। सो दिस इज द रिवर्सल ऑफ डायकोटोमी। द अर्लियर सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश राज बिकेम देयर ओपोनेंट एंड अर्लियर ओपोनेंट्स ऑफ ब्रिटिश राज बिकेम देयर सबॉर्डिनेट पिलर्स। तो ये एक रिवर्सल ऑफ डायकोटोमी है, इसको याद रखें। आई गेस दिस क्वेश्चन इज डन। नीचे पीडीएफ होगा जो भी मिला हुआ है आपको। आप व्हेन यू विल रीड द आंसर यू विल अंडरस्टैंड कि इट इज हाउ यू हैव टू फ्रेम इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you understand by the commercialization of Indian agriculture? Discuss its impact on Indian society and economy during British time. Commercialization of Indian agriculture से आप क्या समझे? And its impact on Indian society and economy during British time. पहले तो कुछ समझ लें। When British, देखो एक एम्पायर जो होती है ना, एम्पायर एंड किंगडम, देयर इज ग्रेट डिफरेंसेस बिटवीन एम्पायर एंड किंगडम। इट्स हाफ एन आवर लॉन्ग टॉपिक विच आई हैव नो इंटेंशन टू टेक। आप में से कई लोग ये भी कहते होंगे कि यार इतनी धीरे धीरे क्यों पढ़ाते हैं, एक सवाल में 1-1 घंटे लग रहे हैं, बट बिलीव मी इट इज टू अंडरस्टैंड वेरियस एंगल्स। एम्पायर एंड किंगडम हैज a lot of differences. एक तो है कि empire is expanding imperial, kingdom is generally unicultural. Empire has imperialism, empire always tends to increase its size, kingdom is a natural tide. ये कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे ये कोई डिफरेंस नहीं है। एम्पायर भी छोटी हो सकती है, किंगडम भी बड़ी हो सकती है। गुप्ता किंगडम है कि गुप्ता एम्पायर है, तो जनरली माना जाता है एम्पायर इज बिग विद वेरियस किंगडम्स इन इट, इसलिए एम्परर जो होता है वो एम्परर, होली रोमन एम्परर, और छोटी किंगडम का किंग होता है। बट उससे ऊपर जब आप आते हैं, वी सी एम्पायर जनरली रीऑर्गेनाइजेस द इकोनॉमी। एम्पायर का जोर होता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करना, वेयर एज किंगडम इट डू नॉट एक्टिवली इंटरवीन इन इट, इट्स सिंपली क्रीम ऑफ द सरप्लस। ये जाके एग्जिस्टिंग लोगों से बस टैक्स वसूल लेगी। एग्जाम्पल देखें इसका, इफ देयर इज अ पोर्ट सिटी एंड देयर इज अ रिवर, और यहां के लोग वीट उगा रहे हैं, अ किंगडम विल गो टू दीज peasants, will collect the tax, will go to this port, will collect the ड्यूटी, जो भी ऑक्ट्रोई चुंगी उंगी लगेगी वो लगा लेंगे। नाउ व्हाट एम्पायर विल डू, ऑल्दो दे विल कलेक्ट द टैक्स बट दे विल स्टार्ट गिविंग टैक्स ब्रेक। वो टैक्स ब्रेक देंगे, ऐसा करो ये क्रॉप को चेंज कर लो, ये वीट मत उगाओ, सो कॉटन उगाओ इसमें, सो जूट उगा लो, टी या जो भी उग सकता है यहां, वॉट एवर कैश क्रॉप, बिकॉज इट्स इजी टू टेक अ कोस्टल कैश क्रॉप आउट ऑफ द कंट्री फॉर एक्सपोर्टिंग, और उनसे कहा जाएगा कि वीट हम आपको दूसरे यहां से देंगे, भेज देंगे। तो गोडाउन्स विल बी क्रिएटेड जिसमें वीट रखा जाएगा, एफसीआई के गोडाउन्स बनेंगे, वीट रखा जाएगा। इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वीट दे विल बी इंस्पायर्ड टू प्रोड्यूस कॉटन, जूट, और स्पोर्ट में वो
फैसिलिटीज बढ़ाएंगे, स्पोर्ट का साइज बढ़ा के, इसमें डॉग यार्ड और ये सब बनेगा, many things will be created here, and then the entire economic restructure will take place. They may increase railways, this river will be given the facilities to have boat transportation, and so on. I have numerous examples of that. This is the job of an empire. इसीलिए एम्पायर एम्पायर। आगे और एक चीज होती है, एम्पायर हैज अ हेजेमोनिक कल्चर। एम्पायर हेजेमोनिक होती है। हेजेमोनिक का मतलब यह है कि दे क्रिएट इंपीरियल आर्किटेक्चर्स, दे चेंज द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द लोकल किंगडम्स, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनवाते हैं, then people start copying them. In North India you will see Shiv temple having elaborate domes, dome wale Shiv temples. So that is the hegemonic culture which we start following. अब आप देख लो हमारा पहनावा, ओढ़ावा, एयर कंडीशन, ये सब कुछ it's entirely the product of West. तो this is also empire. Kingdom do not have that hegemonic culture. वो kingdom उतना hegemonic culture नहीं create करती है. And there are many differences which I am not interested in discussing here. So we are discussing the commercialization of Indian agriculture. So it's the feature of Brit. That's why we call it British Empire. They came here, they intervened in our economy, and they intervened at every level. Today, India is also intervening at every level of economy, but we do not call it empire. The reason of that is it is democratically elected. हमने अपना वोट डाला है, first thing. Second thing, I have right of speech. I have freedom. I have right to form a political party. Even I can work, aspire and declare that I want to run this country. आज मैं यहां पे बैठ के ये कह सकता हूं कि मुझे भी ये देश रन करने का चांस है, इफ आई कैन। अब ये अलग बात है कि आप लोग नहीं बनने दोगे, वोट ही नहीं दोगे, वो बात अलग है, बट स्टिल आई कैन ट्राई डूइंग इट। दैट्स व्हाई इट्स नॉट एम्पायर। कभी आपसे कोई पूछ ले कि व्हाई इंडिया इज नॉट एम्पायर, इंडिया एम्पायर क्यों नहीं है, तो योर आंसर शुड बी इट्स डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड विद ऑल द फ्रीडम्स, एनीवन कैन राइज टू बिकम द हेड। हम राष्ट्रपति भी बनने की सोच सकते हैं, प्रधानमंत्री भी। आई कैन ओपनली राइट। अब सेंटर में पूछा गया वेयर यू सी, अब यूपीएससी में पूछा गया वेयर यू सी योरसेल्फ आफ्टर 10 years, तो आप कहेंगे आई सी माई सेल्फ एज योर बॉस आफ्टर 10 years। 10 साल बाद मैं तुम्हारा बॉस होऊंगा, आई विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। अब ये बात अलग है कि वो आपको भगा दे वहां से, कहेगा ऐसा है कि फिर तभी मिलेंगे, बट यू हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम। जेल नहीं भेजा जाएगा उसके लिए कि किंग की आर्मी आएगी और यू आर कंस्पायरिंग और ऑल दैट। लोग हंसेंगे आपके ऊपर, यू विल बिकम अ लाफिंग स्टॉक, बट नथिंग इलीगल इन दैट। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एम्पायर। याद रखना है बात। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? डिस्कस इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। तो पहले आप देख ले कॉमर्शियलाइजेशन क्या चीज है। बिफोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, मुगल भी एम्पायर है, दे ऑल्सो डन अ लॉट ऑफ इंटरवेंशंस। मेडिवल हिस्ट्री में इन जीएस वी हैव रेड की तकावी लोन होते थे, लैंड वाज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, पोलज, खराज, चाचर, बंजर। देन देयर वाज वेरियस जब्ती सिस्टम, आईने दहसाला, पट्टा कबूलियत। तो ये सब दिमाग लगा के अकबर और टोडरमल ने, और थोड़ा उसमें शेर शाह सूरी का भी इनपुट था, वो उसने दस्तूर बनवाए एट सरकार लेवल, क्रॉप वाइज, ये वो, तो मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम। तो ब्रिटिश ऑल्सो हैव मेड समथिंग ऑफ एम्पायर, बट नॉट एज हाई। देयर centralization, their intervention was not as high as British, obviously. British was technology थी, bureaucracy थी, everything was there. So, earlier than British, generally villages were almost self-sufficient. I am not talking about post-Gupta, self-sufficient villages.
विच कॉज द डिक्लाइन ऑफ अर्बनाइजेशन। वो बात नहीं कर रहा हूं मैं कि आप में से कोई टेक्निकली पूछने लग जाओ, सर वो आपने बताया था आफ्टर गुप्ता एज विलेजेस बिकेम सेल्फ सफिशिएंट एंड अर्बनाइजेशन डिक्लाइन। यहां सेल्फ सफिशिएंट का मतलब है दैट विलेजर्स प्रोड्यूस एवरी ऑफ देयर ओन नीड लोकली एंड एक्सपोर्ट दिस गुड्स। ऐसा नहीं है दे डू नॉट एक्सपोर्ट, वो गुड्स एक्सपोर्ट होंगे, बट द कंसेप्ट ऑफ इंपोर्ट इन विलेजेस वाज नॉट टू मच। जैसे विलेजर्स वांट टू और दे हैड टू यूज कॉटन, कपास, वो जो कपड़ा पहनते थे, तो दैट कॉटन वाज जनरली आइदर लोकली प्रोड्यूस्ड और प्रोड्यूस्ड विद इन द क्लस्टर ऑफ विलेजेस। 8-10 विलेजेस के बीच में कहीं से कॉटन बनता था। ऐसा नहीं है कि कॉटन पुणे से आ रहा है, पुणे से जाके कॉटन लेके आए, वी आर इंपोर्टिंग कॉटन फ्रॉम पुणे। कहीं पूरे जिले में अब इन एंटायर डिस्ट्रिक्ट यू रोम एंड यू कैन नॉट फाइंड अ सिंगल क्रॉप ऑफ कॉटन, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। शुगर केन वॉज लोकली प्रोड्यूस्ड, शुगर केन भी लोकली प्रोड्यूस होगा। टी वॉज नॉट लोकली प्रोड्यूस्ड, बिलीव इट्स इवन हार्ड टू इमेजिन दैट 100 years ago we did not drink tea. Once I asked my grandparents कि बचपन में चाय पी थी, तो उनका बचपन तो छोड़ो, जवानी में भी नहीं। It's only in 70s my family has or our family has started drinking this culture of tea. और अब तो we drink it occasionally. बोर हो रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट आया, सर आई वॉन्ट टू मीट यू, तो उसको बताया यार दूध लेते हुए आना, चाय पी जाएगी, फिर आगे बात करते हैं एट माई होम, ऐसा ऑफिस में नहीं। सो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड। अब हमें पता है टी कहां, टिटली टी, वो ग्रीन टी पी लो, कहां ग्रीन टी उग रही है। तो ब्रिटिश कॉमर्शियलाइजेशन was when it was not there, things were produced either inside village और village से कहने का मतलब है within cluster of villages, वहीं पे वो बन जाती थी everything. However, what British have done, they have started introducing absolute commercialization, first thing, and second thing they have made, पहले एक point समझ लें, then I'll come back here. What British have done, they have created the specialist crop producing regions. ब्रिटिश ने स्पेशलिस्ट क्रॉप प्रोड्यूसिंग रीजन्स क्रिएट किए. लेट्स हैव अ लुक. दिस ब्लैक सॉइल रीजन was for the production of cotton. Rice, spices, cotton, tea, jute, rice, sugar cane, wheat, opium, coffee, I think that's enough to write. ठीक है. So these were the specialist crop producing region. आप इनमें देख लें, apart from this wheat and rice, everything else is cash crop. Tea is also cash crop. याद रखना बात. चाय आप ऐसा नहीं है दिन भर कहीं
चाय चाय पी जाए। अभी लॉकडाउन में कोई दिन भर चाय थोड़ी ना पी ली थी, चाय तो बस ऐसे ही शौक है। जूट इज कैश क्रॉप, शुगर केन इज ऑल्सो कैश क्रॉप, चीनी कितनी फांक लोगे। कॉटन इज कैश क्रॉप, कॉफी, स्पाइसेस, all these are cash crops. Now, first, this led to extreme commercialization. पूरा इलाका वही क्रॉप उगा रहा है। Even these people who produce rice and wheat, majority of their produce is being sold or they are forced to sell. वो आगे देखते हैं। That is commercialization of agriculture. अभी इस पे और डिस्कशन होगा, वेट। Second is what they have or what they are doing कि the regions have lost their self-sufficiency, या कह लें डिपेंडेंट रीजन। अब आप ये देखो कि इन द रीजन ऑफ ब्लैक सॉइल ऑफ महाराष्ट्र क्रॉप फेल हो गई, कॉटन फेल हो गया। अब यहां फेलियर से मतलब है कि, या वो छोड़ो, कॉटन तो क्या बाद में फेल होगा। इफ फेमाइन केम इन व्हीट प्रोड्यूसिंग रीजन, क्रॉप नहीं हुई व्हीट प्रोड्यूसिंग रीजन। अच्छा, एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी, बर्मा वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडिया and it was the great center of rice production. अब आप जैसे ये देख लो कि बर्मा conquered by Japanese came, conquered Burma. लेना नहीं देना नहीं, no stakes of Bengali people, famine वहां गया। The reason is entire Bengal is producing jute and is dependent on Burmese rice, बर्मा के राइस पे डिपेंडेंट है। अब आप आज आईपैड, आईफोन खरीदने जाओ तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू बाय देम आईपैड, तो एटलीस्ट द रीजन इज चाइना से सप्लाई डिसरप्टेड है। इफ यू वांट, इफ देयर इज फेमाइन इन दिस व्हीट प्रोड्यूसिंग रीजन, तो फेमाइन स्प्रेड होता था बहुत तेजी से, पूरे साउथ इंडियन फेमाइन, स्कल फेमाइन, चालीसा फेमाइन, ये तुरंत फेमाइन भागता था। द रीजन इज कि वेयर एवर इट केम, तो फेमाइन एक जगह से दूसरी जगह तुरंत जाता था। Now, if there is famine in Punjab, तो this famine will go into all the nearby region. अब जो शुगर केन प्रोड्यूस कर रहे हो दिन भर गन्ना थोड़ी ना खाएंगे यार, they have to eat wheat, which they will not find. So this commercialization and this specialization, specialized crops, that's also a result of this commercialization. Specialized and commercialized crops have created the dependent region. Apart from many things, the list तो बहुत लंबी, अभी पढ़ दूंगा तो लिस्ट ही लिस्ट है। Apart from many things, the main bane, जो सबसे बड़ा अभिशाप, the curse was the curse of famines. मिलियन तो कोई चीज ही नहीं है मर जाने। 1876 to 78 there was great Indian southern famine, the first 2 years of Lord Lytton. लॉर्ड लीटन थे, उनके फर्स्ट 2 years ग्रेट सदर्न इंडियन फेमाइन में थे। एंड द रीजन ऑफ दिस फेमाइन मूविंग एवरीवेयर वाज दिस राइस फील्ड। अब कितनी कॉफी नीलगिरी वाले पी लेंगे और कितनी ब्लैक पेपर केरल वाले खा लेंगे, और कितना कॉटन जो है वो महाराष्ट्र वाले उगा लेंगे। When you are eating their rice and their crop field, तो you are next in line. पहले तो आप ही जाओगे वहां, तो कुछ तो क्रॉप, कुछ तो राइस उगा होगा, they'll not sell it. So therefore this commercialization and specialization, this became a great bane for India. ये इंडिया का, although the students of geography, तो geography के स्टूडेंट देख रहे हैं, उन्हें इससे ज्यादा ही पता होगा क्रॉप्स के बारे में कि what are the regions of crops. मैं हिस्टोरिकली काम चला रहा हूं। सो दिस क्रॉप्स फॉर सेल बिकेम, नाउ व्हाट आर द सोशल इफेक्ट्स ऑफ दिस, इसके इफेक्ट क्या क्या है। तो फर्स्ट,
प्रीरिक्विजिट, इट नहीं, अ प्रीरिक्विजिट, ये होगा ही तभी व्हेन यू हैव प्रॉपर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप्ड. Modes of transportation increased because of these crops, because of these moving of crops from one region to another. Second, we see what happened here. So, all India interaction of people took place. So, exchange of ideas and people. All India consciousness has generated. ये पहले पॉजिटिव लिख लेते हैं, तारीफ करते, फिर however लिख के. Third, we will see that it made Indians, or it resulted in the rise of cities, urban centers. Either the urbanization of, देखो भाई आ गई कैश क्रॉप. Urbanization of Indus Valley civilization, which was first urbanization, or urbanization of our age of Buddha, second urbanization, or the urbanization which started in 10th century, third urbanization, or the urbanization started during British period, fourth urbanization. चार urbanization, any urbanization needs movement of people. इधर आप देखेंगे करोल बाग मेट्रो स्टेशन. There was a time, अब तो गूगल अर्थ में you can go back and can see, there were no shops near the metro station. किसी मेट्रो स्टेशन के दिल्ली के पास कोई शॉप नहीं थी. As metro station popped up, you will see various shops started opening. वो जूस की दुकान खुल गई, रोल बेचने लगे, बर्गर बेचने लगे, चाय बेचने लगे, फोटोस्टैट हो गया. A lot of shops, they surround it. On highway you must have seen कि there is a road which moves into the deep into villages. You will find some shops. इस चौराहे पे कुछ दुकानें बनने लग जाएंगी. So movement breeds urbanization. All the new cities at crossroads, either new cities popped up like Bombay, Calcutta, Madras, Bangalore, Chandigarh, or the already existent cities started exploding at the rapid pace. आप देखें 50 years ago, या मेरठ, जो ओरिजिनल मेरठ चले जाओ, ओरिजिनल पूना चले जाओ, इट इज वेरी स्मॉल लाइक अ फोर्ट, छोटा सा है वो. 19th century आप आ जाते हो, देख लो तो दिल्ली तो रोहतक तक पहुंच गया. So these three are the positive consequences which I can remember now. Then there are negative consequences, a great list of it. नेगेटिव में देखें, फर्स्ट देखो होता यह है कि ड्यू टू दिस कॉमर्शियलाइजेशन ऑल द क्रॉप्स वाज फॉर सेल. सेल के लिए क्रॉप होती है. इन अनरेगुलेटेड मार्केट यू हैव टू सेल क्रॉप. जो प्राइस डिसाइड होता है, दैट्स वाई इन जो फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसमें प्राइस डिस्कवरी इज डन बिफोर क्रॉप इज बीइंग सोन. अगर क्रॉप खड़ी है और तब प्राइस डिस्कवरी हो रही है तो प्राइसेस विल कोलैप्स. आपकी फसल खड़ी है, आपको कल काटना है, एंड यू आर आस्किंग मी डिस्ट्रेस सेल. कहोगे सर खरीद लो, तो मैं कहूंगा भाई ₹1 किलो लगा दो इसको, बिकॉज आई नो दैट यू आर डेस्परेट. So entire sale in this entire commercialization was distress sale. Premchand has written hundreds of stories, 50s तो हैं at least, हम सब ने पढ़ी होंगी, कि how after selling entire of his crop, the peasant returned empty-handed. Reason is जब उसने उधार लिया था, whenever he took the debt, the prices were high. जून में उसने डेट लिया, प्राइसेस बढ़े हुए हैं. नवंबर में वो सेल कर रहा है, every price, all the prices collapsed. So commercial crop never gave them the proper money.
उसको प्रॉपर कभी भी पैसा नहीं मिला। सेकेंड, इन द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑब्वियसली, रूरल इंडेटेडनेस। पूरी तरीके से रूरली वो इंडेटेड हो गया। यू विल सी कि इन माई एंसेस्ट्रल विलेज देयर इज अ सेइंग, इफ यू फाइंड अ स्नेक एंड साहूकार, सांप मिले और साहूकार मिले, तो किल साहूकार फर्स्ट, यू मे लीव द स्नेक। अगर सांप और साहूकार मिले तो साहूकार को पहले मारना, सांप को भले एक बार छोड़ भी देना। सो दैट्स द हाई रूरल इंडेटेडनेस। मेजॉरिटी, a lot of Premchand's stories, sad stories end that 100 years have passed। जो स्टोरी, मेन स्टोरी खत्म हो गई और लास्ट की लाइन में लिखा है 100 साल बीत चुके हैं। आज उसका ग्रैंडसन आज भी अपने दादा का कर्जा उनके खेत पे जाके उतारता है। ही गोज टू, या 30 साल बीत गए, आज वो लड़का और पोता दोनों उसी खेत में अपने बाप का लिया हुआ कर्ज चुका रहे हैं। दैट्स द टाइप ऑफ रूरल इंडेटेडनेस दैट वाज वेरी प्रेवलेंट एंड वी ऑल कैन फील इट वेरी इजीली। थर्ड देखें, व्हाट्स द दिस कैश क्रॉप्स है ना, इंडियन इकोनॉमी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इट। हमने अपनी क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। एक्सपोर्ट, ये नेक्स्ट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट है वैसे तो, बट वी बिकेम एन एक्सपोर्ट, रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी rather than finished goods exporting economy. The reason we started overproducing. Some regions have started overproducing. अब in Maharashtra region, entire cotton was not produced. या मशीन तो थी नहीं, तो this cash crop was being exported. Then you will see, due to this cash crops, वैसे तो इसका इफेक्ट नहीं है, बट स्टिल that our economies, the rural economy became money oriented economy. बस ध्यान से समझें कि older times there was a system called जजमानी system. I don't know any one of you ever experienced it. एक आइसक्रीम वाला गांव में आता था, एन आइसक्रीम मैन, नॉट दीज आइसक्रीम, ये वनीला वाला फ्लेवर नहीं लेके आता था। एक तरीके से स्वीट वाटर, पानी में वो चीनी मिला लेगा, एंड देन ही विल पुट नारियल, वो जो भी होता है नारियल, एंड ही विल क्रिएट एन आइसक्रीम। वो लकड़ी के डिब्बे में बांध के अपने गांव से साइकिल पे लेके आता था। ही एक्सेप्ट कैश, बट ऑल्सो you can take some grain, you can take some iron material, you can take something of kind, and when you will give it to him, he'll give you an ice cream. And in my absolute childhood, I remember कि whenever I stayed in village, अब घर में कोई लोहे का सामान पड़ा है, हो सकता है वो ज्यादा ही कॉस्टली हो, इट मे बी कॉस्टलियर देन वो 2 रुपए की आइसक्रीम। 2 रुपए का तो लोहे का टुकड़ा नहीं होगा, ज्यादा ही होगा, बट वी फील कि यार फ्री में काम हो गया, पैसे तो है नहीं, छत पर से कुछ उठा के दे दिया उसे, एंड ही ऑल्सो टुक इट। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स इन रूरल इकोनॉमी वर नॉन मोनेटाइज्ड। उनके लिए उतना एग्जैक्ट मनी की जरूरत नहीं थी, बट एज दिस कैश क्रॉप्स स्टार्टेड, देयर इंक्रीज द यूज ऑफ मनी, मोनेटाइजेशन इन द रूरल इकोनॉमी, and farmers did not had the money for the needed monetization. That's why you will see why urban poverty is more difficult than rural poverty, because in urban society everything is monetized. हर कुछ monetized है, दूध भी पैसा लेके आएगा, उधार का तो कंसेप्ट ही नहीं, और ऐसा कुछ नहीं, रिटर्न द फेवर, पैसा है नगद, कैश, गिव द कैश, गेट द सर्विस, नो कैश,
Okay, no money, no fun. Whereas rural economy still are non-monetized. भूख लगी हुई है तो कहीं किसी के कुएं से पानी पी लोगे तो पैसे नहीं मांगेगा. You can go into some field, वहां से एक गन्ना उखाड़ के खा लोगे या चना खा लोगे तो no one is going to ask the money. So still rent, अभी भी villages में rents are not prevalent. You will find many houses where no one is living, and if you take the keys, तो he will happily give you कि you take care of my house and stay. हम लोग बहुत सारे लोग जिनकी फैमिलीज अब गांव में नहीं है, वो अपने गांव के घरों को किसी को दे के आए हैं. देयर इज नो रेंट सिस्टम. सो देयरफॉर monetization of rural economy. And what's the great problem in monetized economy? If you don't have money, it's impossible to survive here. Poverty is very bitter here. Then you'll see, और कुछ बचा? The biggest legacy is famines. That's why you'll see in sugar cane, the support price is always kept low, because we do not want all our farmers to shift into this. हम ये नहीं चाहते हैं कि all our farmers shift towards producing sugar cane. इसलिए sugar cane का प्राइस लो रखा जाता है. That's why MSP is given in carbohydrates. आज भी दाल में MSP नहीं दी जाती है. Yeah, it's not very prevalent in pulses. The reason is we don't want all our farmers to produce pulses. First, we want them to produce wheat and rice. Food security. That's why these are the historical legacies in our agriculture. आज फार्म बिल का इसलिए सब विरोध हो. What's my view on this? Not needed. Current affairs में जो भी आपको व्यू बताया जाए कहीं, whatever views told in current affairs notes में कहीं पर भी newspaper में, because my view may not be very interesting, but छोड़ो. Next is क्या हो गया? Next is the decline of handicraft traditional industries was direct result of British rule in India and had mostly negative consequences on India. तो प्रश्न ये है कि डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वाज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. छोड़ें. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड. आई होप यू विल रिमेंबर इट, बाय हार्ट इट. इसको ठीक से याद कर लें. लाइक वी हैव रिमेंबर्ड द टेबल ऑफ 1857, एंड दिस विल give the answer of all questions related to colonial economy. colonial economy के हर सवाल का जवाब इसमें से आपको मिलेगा. Let's see कि what's that. एक टेबल बनाते हैं. I generally give this table in every class, so all those who have attended the class must be aware of this. देखो, there is the start of colonial trade. Now when I put the date 1650s, it's not that everything changed on its head. ऐसा नहीं पूरी इकोनॉमी 1650s में जाके चेंज हो गई. But the start of that change, like we see 1991 reforms, India post 1991. तो ऐसा थोड़ी ना 1 जनवरी 1992 entire India has transformed. सब लिबरलाइज हो गया, सब लोग खुशहाल हो गए, सबके पास मोबाइल फोन आ गए. It goes slow, but we pick the representative dates. हम representative dates pick करते हैं. It's easy for us to, for our academic purpose. अब बोले मॉडर्न इंडिया 1707 से शुरू हुई, तो है थोड़ी the औरंगजेब closed his eyes, the modern India awakens. औरंगजेब जैसे ही मरा पूरा देश मॉडर्न हो गया. It's not that. People that time will not feel it. But we have taken a representative dates की notes, chapter, class कहीं बताने में कुछ, it should be discussable, बताएबल हो कि बता सके यार ये हुआ था. तो 1650s. Second is 1650s to 1765. If this would have been class with the students, I must have asked why I have picked the date 1765. तो Treaty of Allahabad, when British got the Diwani rights of India. 1757 नहीं डाला because in Plassey the so much resources was not available. अभी भी वो लूट के ही खाते थे.
But after 1765, legally they started getting a great amount of money. 1765 to 1813, the Act of 1813, which has ended the company monopoly and thrown Indian market open for British businessmen. आओ जो मर्जी सामान बेचो. It's mainly because, or the great force behind it was the continental system of Napoleon, which we have discussed in world history. Then 1813 to 1870s, when Suez Canal was made in 1869, German Union and Italian unification was done in 1871. But American Civil War also ended and America moved towards the rapid path of industrialization. तो ये चार इवेंट जो हुए, Suez Canal opened, तो Europe was directly connected to India. America started producing. Japan में भी Meiji restoration हुआ, but India did not felt the immediate consequences of that. So after this 1870s, we'll see that all the markets will start opening for India. British monopoly in India will not be that much. These are the phases of colonial economy. We'll try to understand what's the export and import of this. वही हमको समझ में आएगा colonial nature क्या है. I know it's time taking, but it will benefit you not only in this answer but everywhere. Import from India. नहीं, import आता है ना, import तो आता है. Import into India. ये हमेशा याद रखें. I was always jumbling up this. Export. एक्सपोर्ट तो जाता है ना, इट गोज आउट ऑफ इंडिया. तो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. लेट्स सी 1500 to 1650s. द मेन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया वॉज स्पाइसेस. Spices was the main export. Secondary export was textile. ठीक. Main export was spices. What came into India? Main trade surplus of gold and silver. हॉर्स और परफ्यूम और ग्लास और क्विक सिल्वर और ये सब फालतू चीजें नहीं लिखेंगे. द रीजन इज इट वॉज नॉट सो इंपॉर्टेंट. तो चाहें तो आप लिख लें, बट मुगल एम्पायर स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग. शाहजहां के टाइम पे मारवाड़ का रीजन जो है, डेजर्ट रीजन, वहां पे अरबी घोड़े प्रोड्यूस करने शुरू हो गए थे. तो मारवाड़ी हॉर्सेस became prevalent in India from 17th century. 17th century के शुरुआत से ही so much dependence on imported horse reduced. 1650s to 1765, the main export into India. India में जो main export out of India, main export out of India, it became textile. The reason was, by mid 17th century, the backward agriculture, the time of troubles, the food scarcity started going low, and Indian spices were in demand in Europe mainly for the preservatives. वो सब्जी में और दाल में मिर्चा अचार नहीं डालते थे. They used to use it for preservative. Like mango is not available round the year, we make pickle and eat that mango. कम से कम at least we can take the flavor. That's because we preserve it with the help of spices. उसको स्पाइस में डाल के प्रिजर्व कर देते हैं.
तो देखा होगा ना, वो तभी वो तीखा भी, वो खट्टा भी, वो मुंह में जो पानी आ रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ दैट स्पाइसीनेस. सो स्पाइसेस बिकेम द secondary export from India. Textile became the primary. Kerala का कैलिकोज which was exported from Calicut, तो क्या नाम ही कैलिकोज. बंगाल का टफेटा सिल्क. आंध्र प्रदेश तेलंगाना का मुस्लिन. देन कांची एंड बनारस का सिल्क. That was in the great export. That was the greatest exports of India. So much so that many countries have banned the import of calicos in their domestic country. Calicos पे ban लग गया. That was the success of calicos. In 1670s and 1680s, more than 80% of the weightage of Portuguese trade was calicos cloth alone. सिर्फ कैलिकोज, नथिंग एल्स. 80% कैलिकोज जाता था. सो देयरफॉर टेक्सटाइल बिकेम द मेन एक्सपोर्ट फ्रॉम, एक सेकेंड, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. ठीक है. व्हाट कम्स टू इंडिया? गोल्ड एंड सिल्वर एज ट्रेड सरप्लस. तो इफ ए क्वेश्चन कम्स दैट यूरोपियन ट्रेड हैज मेड अस पुअर, always remember that first phase have made us rich. चाहे विजयनगर एम्पायर, त्रावणकोर, मुगल एम्पायर, ये जो बिल्कुल इनके बारे में आंख बंद करिए, जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट देम, यू विल फील दैट दे आर वियरिंग अ लॉट ऑफ गोल्ड. सोना ही सोना पहन रखा है, हर जगह सब कुछ गोल्ड का है. रीजन इज दिस यूरोपियन ट्रेड. आई हैव नॉट टोल्ड यू अबाउट द ट्रांस अटलांटिक ट्रेड. उसमें टाइम चला जाएगा, तो आई थिंक you will see that entire gold brought from Americas north and south first comes to Europe and then drains into India and China. सारे का सारा गोल्ड एंड सिल्वर पहले यूरोप जाता था, यूरोप से वो ड्रेन हो जाता था इंडिया एंड चाइना. तो देयर इज अ गुड मैप अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑफ 17th century. Anyone who's watching this, comment करना. If in comment I find that someone is interested knowing in, I'll tell in next class because it will take around 10 minutes. तो कमेंट करें, हमें लिखें, write us, तो कमेंट कर देंगे तो it will be easy for me to take it up in the next class. I'll take it. 1765 to 1813, the main export which started going out of India, remember, is still textile. Industrial revolution is yet to start. even start ही वो लेट में हुआ है. तो इट्स नॉट दैट वी स्टार्टेड सेलिंग कॉटन और सेंडिंग कॉटन एंड स्टार्टेड बाइंग टेक्सटाइल, ये सब बाद में आएगा. हाउएवर, वेरी इंटरेस्टिंगली, नाउ gold and silver do not come from Europe. To buy this textile, gold and silver of Bengal is used. अब कैलिकोज खरीदना है तो गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम बंगाल विल गो टू केरल, कैलिकोज विल गो टू यूरोप. इफ दे वांट टू बाई चाइनीज टी, क्योंकि टी इंडिया में 1830 से शुरू हुई है, इफ दे वांट टू बाई चाइनीज टी, तो गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम बंगाल विल गो टू चाइना. In China, they'll give that money and tea will leave for Europe. So therefore, instead of import into India, this gold and silver either remained in India in the case of Kerala we have seen, or left India in the case of Indonesia or China we have seen. Gold and silver. And what started coming to India? Nothing substantial. कोई सब्सटैंशियल चीज नहीं आई. ठीक है, ये नहीं चाइनीज टी हम खरीदे, इतनी नहीं खरीदते थे, थोड़ा बहुत तो बहुत कुछ आता था, हम कुछ ही आ रहा है, आज भी आ रहा है. स्टिल वी मस्ट बी सेलिंग सम टेक्सटाइल और सम कॉटन.
I'm talking about some bulk and mass things. 1813 to 1870s, what India started selling. So now industrial revolution, the overproduction of industrial revolution, has subordinated Indian economy to the needs of British economy. अब ब्रिटिश ने ये देखा कि हमें किस चीज की जरूरत है. What they wanted cotton from us, raw cotton. And what they started selling us? Textile. Even this gold and silver en masse did not left India. वो कोई en masse नहीं जाता था. वैसे तो the wealth is being drained, तो ठीक है, लिख ही लेते हैं. सॉरी, import from India ना. अरे यार, still leaving in the form of various unilateral transfers and many things. Now 1870s to 1935. I'm talking about major. So textile as a major source cotton as a major source did not left India. जा रहा था cotton, but not so. We will write that as second. The main thing which starts leaving India, पहले तो import लिख ले, तब समझ में आएगा export क्या है. So what main thing started coming to India? Textile was secondary, or finished goods was secondary. The main thing which starts coming to India was loans. Loan आने शुरू. When railway was created, Great Indian Peninsular Railway, wonder of its time. Its time छोड़ो, wonder of today. You go into that Peninsular Railway, Konkan Railway, इन सब में जाओ तो आपको लगेगा कहाँ का. Who funded it? British private capital. इसको simplify करने के लिए, railways to be made, railways started asking for loans. अब लोन के जो पेपर थे, they were not available in India. Indian kings, Indian business class, Indians, इनके पास they could not provide loan to railways. Reason is railway was searching for loans in Britain. कोई दिक्कत नहीं, जो लोन ले देता है वो एक तरीके से he will also own the risk. It was made risk free. कहा गया 4% का assured guaranteed return. तो ये guaranteed return इंडिया में क्यों नहीं? The reason is they perhaps do not wanted Indians to interfere, or they do not, शायद उनके दिमाग में did not occur to them. Indian money was not used. और जिससे आप उधार लोगे उसी से आप इंटरेस्ट भी उसी को दो. तो loans used to come into India. What used to leave? Interest. Interest started leaving India. Then what started leaving India? Various military and civil expenditures. This is true here also, but not primary. अभी primary तो cotton है, ठीक है. Military and civil expenditures that started leaving India. Then what started leaving India? Export from India. Apart from interest is the transfer of funds. Surplus budget. Firoz Shah Mehta many a time said that how a poor country like India is giving surplus budget. आप देखें दुनिया में कहीं बजट surplus नहीं होता. Because there is no end of government's obligation. Government is not to earn profit. इसलिए हमेशा बजट डेफिसिट में रहता है कि भाई we have the revenue of 1000 crore, but हमारे पास इतने सारे काम है कि we'll spend 1100 crores. 100 crores हम कहीं से उधार रेज करेंगे, we'll raise the money and because we have this many works. ऐसा नहीं है 900 करोड़ 100 करोड़ will earn. The government has no job to do. The government has no business to do business. So loans started coming to India, and obviously with that, now
what I want to tell, this is called, the first one is called the mercantile phase. What is mercantilism is a different story, will take a lot of time. ये भी जानना हो तो कमेंट करें, एक दो कमेंट आएंगे तो I'll certainly tell in the next class कि what is mercantile phase, because I don't want to digress कि अब मैं mercantilism समझाऊं तो mercantilism का मतलब यह है कि अर्निंग गोल्ड एंड सिल्वर इंस्टेड ऑफ लूजिंग. इट मीन्स इंक्रीजिंग योर एक्सपोर्ट एंड रिड्यूसिंग योर इंपोर्ट, अल्टीमेटली अर्निंग मोर एंड मोर गोल्ड एंड सिल्वर. सेकेंड फेज इज कैपिटलिस्ट फेज. Here we do not restrict import or export. आपको जो अच्छा है आप बेचो, मुझे जो अच्छा है मैं बेचूं. Only thing is, with technology innovation, I'll improve the value of those things. Plastic है, you can sell plastic as raw plastic, you can sell plastic as toys, you can sell plastic as utensils, you can sell plastic as laptops, you can sell plastic as high grade medical equipment. अब कैपिटलिज्म में मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, I'll not restrict you selling me toys. I'll not say कि stop selling me toys. I'll buy toys from you. I'll buy the scrap. I'll collect the scrap. मैं जब आपके टॉयज खराब होकर जो उसकी प्लास्टिक होगी उसको खरीदूंगा. I'll put into my own furnace. I'll उसको क्या कहते हैं प्लास्टिक को regrade or reproduce that plastic and I'll start making laptop and I'll sell you laptops. आप मुझे प्लास्टिक के टॉयज बेच रहे हो, उतनी प्लास्टिक 100 रुपए में, मैं आपको उतनी प्लास्टिक 50,000 रुपए बेच रहा हूं. That is capitalism. Trade is nowhere restricted. That is called the free trade. Although it was not truly free. याद रखना है बात, British free trade was never free. It was one way free trade. इसमें बैक मत जाना, but still we call it capitalist phase. Third is when money earns money. In capitalism, goods and services, selling goods and services earns money. कैपिटलिज्म में आप गुड सर्विस बनाओगे, बेचोगे, पैसे कमाओगे. फाइनेंशियलिज्म is when you earn money by giving money. बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. आप उससे 10 लाख रुपए लोन लेते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, पैसे से पैसा कमा लेते हैं. इस एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ये पैसा इधर उधर करके मनी से मनी कमाया जाए तो उसको फाइनेंशियलिज्म बोलते हैं. क्राइसिस ऑफ 2008 was not the global financial crisis. It was not crisis of capitalism exactly. It was crisis of a byproduct of capitalism, which is financialism. That's why this phase is called पैसे से पैसा कमाया जा रहा है. अरे यार, फाइनेंशियल फेज. Financial phase. I guess these are the 3 phases, and this is what happened here. In 3 phases को ये non-colonial phase है. This phase is, these 2 are non-colonial. This is the really free trade phases. अब ये बताने का उद्देश्य क्या है? What's my aim to tell you this? Every of this phase also brought deindustrialization with it. Thinking deindustrialization in isolation or thinking anything in isolation is difficult to remember. आप एक ही दो पॉइंट लिख पाओ. Now our next job is to connect every of this phase. हर इस फेज को कनेक्ट करना. उसके we'll connect every of this phase to its
corresponding deindustrialization. देखें भाई, how we can connect every phase with its deindustrialization. In mercantile phase, there is certainly some deindustrialization. What's the reasons? First reason of deindustrialization in mercantile phase. ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये जो गोल्ड सिल्वर है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, रिड्यूसिंग परचेजिंग पावर ऑफ इंडियंस. तो लोकल परचेजिंग पावर जो है दैट्स गोइंग डाउन. परचेजिंग पावर इज गोइंग डाउन. They want to produce more and more textiles, so they commercialized our crops. They commercialized our crops, and this has brought great famine. आप तो कहोगे कि सर कॉमर्शलाइज हो गई क्रॉप, अब तो और इंडस्ट्री बननी चाहिए. But these brought great famines. The Great Bengal famine 1770. 1/3 of the Bengali population perished. 1/3 of the population. It's equivalent to almost 45 crore people dying in India. इंडिया में 45 करोड़ लोगों की डेथ हो जाए. That's the amount of, that's the equivalence. कोविड तो क्या ही चीज है, तभी तो हम लोग डर नहीं रहे कोविड से. So second is the famines which has disrupted. भाग गए गांव, छोड़ गांव के गांव खाली हो गए. Third, this was the phase when our rural elite saw decline. हमारा जो रूरल एलिट है उसका डिक्लाइन हुआ. Their wealth lowered, so much so that they, as the patrons of industrial goods, or they as the patrons of local artisans, they declined. Decline of local elites. उनकी सेनाएं डिसबैंड हो गई. नाउ अंडरस्टैंड, वन आर्मी ऑफ 10,000, एक 10,000 की आर्मी को कम से कम 15,000 सोर्ड्स चाहिए, एटलीस्ट 10,000 सोल्जर है, 20,000 घोड़े होंगे, एटलीस्ट 1 लाख हॉर्स शू चाहिए. यू वॉन्ट लेदर जीन्स, देन यू वॉन्ट, क्या क्या नहीं चाहिए. नाउ व्हेन आर्मी आर यूरोपियन, तो बंदूकें तो बाहर से आ रही हैं. दे विल हैव देयर, मेजॉरिटी ऑफ दैट विल शिफ्ट. दे विल क्रिएट दैट इन देयर ओन फैक्ट्रीज. वो फैक्ट्रीज में लोकली थोड़ी ना गांव गांव जाके वो सैनिक अपने गांव में नाल लगवा रहा है घोड़े की. एवरीथिंग इज रोबस्ट. अब इंडियन आर्मी कंज्यूम सो मच, है थोड़ी कि हर सैनिक गांव में अपनी बंदूक ठीक करवा रहा है. दैट इज डन ऑन अ नेक्स्ट स्केल. दैट फर्दर हर्ट आवर इंडस्ट्रीज. इसने इंडस्ट्रीज को हर्ट किया. इन सेकेंड फेज यू कैन राइट सम मोर थिंग्स, बट जैसे जैसे याद आता जाए लिखते जाए. लीव स्पेस. इन कैपिटलिस्ट फेज व्हाट हैज डिक्लाइंड, तो these 3 things can be exactly replicated. 1, 2 और 3 तो है ही. Apart from that, we'll see कि the strict policy, ये तो पॉलिसी डिइंडस्ट्रियलाइजेशन की है, ऊपर तो इनडायरेक्टली डिइंडस्ट्रियलाइजेशन है. इन फर्स्ट फेज डिइंडस्ट्रियलाइजेशन इज इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, बट इन सेकेंड फेज डिइंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया इज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन. One way free trade. These champions of free trade are doing one way free trade. एक तरफ से फ्री ट्रेड चल रहा है. It's like Indian selling en mass. En mass सेल हो रही है.
British are selling en masse their own products, own goods, one-way free trade. Then you will see that education is introduced. Who will buy British textiles? Education is introduced. The hegemony of British, जब Indians ने English पढ़ी तो they have generated the tastes like that. उनके taste भी British हो गए, and their British taste means that they are buying suit, boot and hat. वो सूट खरीदते हैं, बूट खरीदते हैं, हैट खरीदते हैं, and this helps them. इससे उनका जो है ट्रेड हो रहा है. With this hegemony, we ourselves are buying their goods. Like in childhood we used to study or we used to read, study तो क्या ही करते थे, read चाचा चौधरी, नागराज, डोगा, etc. But today when we see the movie of this Iron Man and all, we buy their merchandise. हम नागराज और चाचा चौधरी की मर्चेंडाइज नहीं खरीदते. It's not cool for us. Our hegemony is such that we buy their goods. हम उनके goods खरीदते हैं. So that's also in the case of India that they have created the hegemony. Next is rise of Indian urban centers. इंडियन अर्बन सेंटर्स थे तो वो अर्बन कारखाने का जो मशीन गुड्स है वो है, नॉट रूरल. देयर इज अ स्टैट दैट इन रूरल बिहार 23% of rural labor was non-agricultural. It is in 1810s. In 1910s, the non-agricultural labor reduced to 7%. This is deindustrialization. 23% of rural labor of Bihar was doing non-agricultural activities, artisanal activities like ironsmith, goldsmith, potter, weaver. 100 साल में 7% बचा. It was reduced to 7%. Where everyone got into peasantry, overburdening the agriculture. And this overburdening the agriculture made rural center further impoverished. Impoverished villages. तो जब विलेज impoverish हो जाएगा तो people will stop buying. Visualize an Indian farmer. ये पिज्जा खाने वाले, बर्गर खाने वाले नहीं, Indian farmer. He is very much like only wearing a lion cloth. सिर्फ एक धोती पहन रखी है उसने. On above his waist he is wearing nothing. खाना ही खा ले भरपेट. So therefore the impoverished village could not support artisans. एक ऐसी कॉलोनी जिसमें सबकी नौकरी चली जाए, शॉप विल ऑल्सो बी शट डाउन. वहां पे जो दुकानें हैं वो उनका दूध बेचना भी कम हो जाएगा. So these are the reasons of deindustrialization in capitalist phase. In financial phase तो obviously hegemony has increased. Suez Canal. Then we will see financial or business support to India. I hope it's visible. ये तो visible ही है. Financial support to Indian business was poor. Poor financial support to Indian business. That's why we will see cooperative banks sprouted in 1890s, Sahkari Bank. The reason is general banks, exchange banks, they never supported or they did not supported Indians because Indians were not prime borrowers. Then you will see the world companies started entering into India. German goods, American
other European goods, they also started entering into India. तो इससे हमें और hurt हुआ. Main reason of our deindustrialization during this time was the hegemony. That's why our national leaders, they ask us to boycott Swadeshi and boycott movement. कि खुद मत खरीदो. There are many stories or there are many real events of picketing. Picketing का मतलब है we will stand in front of a shop selling foreign goods and we are not going to stop anyone entering the shop, but he will be molested या he will be disgraced for that. उसका मजाक उड़ाया जाएगा, गाली दी जाएगी, and many things will be done to him. By that he himself will not buy. वो खुद ही ना खरीदे. So this is how this deindustrialization took place. It has mostly negative. So our entire table, ये जो table है, this is the causes of deindustrialization. I hope you will remember this with the help of this table. You must have this table with you by heart and remember this table. ये आगे आपके काम आएगी. Let's see what are the negative consequences. इसके negative consequences क्या है? तो impoverishment, rise of money lending class, overburdening of agriculture, we have discussed all of this. Poverty, famines, non-agricultural activities. जैसे आप देखें कि अभी इंडियन गवर्नमेंट सेज कि दे विल डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स. तो बाय ऑल द अकाउंट्स इट इज यूनानिमस, एवरीवन इज यूनानिमस दैट वोंट बी डन बाय फार्मिंग अलोन. सिर्फ खेती करके इनकम डबल होना मुश्किल है. यू नीड फूड प्रोसेसिंग, यू नीड लाइफ स्टॉक, you need various other interventions also. That's why still today Indian peasantry, Indian agriculture is overburdened. आज भी 13% of GDP gives livelihood to 50, half of Indian labor. आधी Indian labor force 13% of GDP agriculture पे dependent है. So this is where this overburdening increased. ठीक है. So let's discuss the next question, which will be last for today. Last decade of 19th century and first decade of 20th century. Last decade of 19th century and first decade of 20th century was the time of strengthening of communalism in India. इसने इंडिया में कम्युनलिज्म को स्ट्रेंथन किया. लेट्स सी. एक 5 minutes break I want to give. ये छोड़े. Let me give you a 5 minutes break and let me settle down. ये होगा कैसे? फाइव मिनट्स का ब्रेक है. आई एम राइटिंग हेयर.
I'll start at 1841 because I don't know how to pause it.
Fourth question. I hope I am audible. The last decade of 19th century and first decade of 20th century was the time of strengthening of communalism in India. Before that, again, not for wasting time, but let's draw a graph of communalism in India. अगर हमें इंडिया में कम्युनलिज्म का ग्राफ ड्रॉ करना हो, हाउ वी विल डू दैट? तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट 1857 से शुरू करते हैं. इन 1857 the graph of communalism was relatively down because we had a common enemy. In decade of 1870s, the controversies started erupting. The first one was the Hindi-Urdu conspiracy, especially in United Provinces. Sir Syed Ahmad Khan started his career perhaps in Agra, if I remember correctly, as a proponent of Urdu as the sole official language of United Provinces. Then he started Anglo-Oriental College, and this was the time 1875 when Arya Samaj also came into being, something which says that there must be return of Muslims into the fold of Hinduism. Obviously, it started increasing. 1870s. Then came the rule of Congress. Not rule of Congress. Then came Congress. Tried to bridge the gap, tried to send the message to Muslims to join it. We may think that they try to curb the pace of communalism, but Sir Syed Ahmad has rejected any proposal of Congress that Muslims should also join it. Sir Syed Ahmad has clearly denounced. Badruddin Tayyab ji was made president in 1888 to lure in many Congress Muslim leaders into Congress. Badruddin Tayyab ji wrote letters. There is a great exchange of letters between Badruddin Tayyab ji and Sir Syed Ahmad Khan, where Sir Syed Ahmad Khan has clearly stated that there are two nations, there are two qawm, Muslims and Hindus, and they are in clear competition. Not exactly in the reply of Congress, but in 1886, Sir Syed Ahmad started Mohammedan Educational Conference, where discussion of politics or political issues were not taken up, but it became the precursor of Congress. As one can say that RSS is the precursor of BJP, a non-political organization, but precursor, the backing it gave to Jan Sangh and to BJP. Now, this started the communalism. We are around 1890. Then came the extremist leaders, Bal Pal Lal. They have started, जैसे 1893 में there were great cow riots. Cow riots हुए. Later you will see that after these cow riots, the use of revivalist iconography on both the sides. उधर देवबंद मूवमेंट, इवन अहमदिया जिनको कादियानी बोलते हैं, अहमदिया कादियानी मूवमेंट. On Hindu side, there was the use of revivalist iconography, Bharat Mata, which is from Anand Math. Generally, Anand Math did not give that romantic version of Hindu-Muslim unity. Anand Math में Hindu-Muslim unity का कोई बहुत romantic version है नहीं. तो the concept of Bharat Mata, then the call of hundreds of years of slavery, then use of Shivaji and Ganesh Chaturthi as political mobilization.
टॉक ऑफ रामराज। तो ये जो पूरा एक्सट्रीमिस्ट ने मास प्रोटेस्ट गैदर किया, दे डिड इट इन द गाइज ऑफ रिवाइवलिज्म। तो एवरी एक्सट्रीमिस्ट वाज आल्सो अ टाइप ऑफ रिवाइवलिस्ट। जैसे आप देखें 1892 व्हेन एज ऑफ कंसेंट बिल हैज रेज्ड द एज मिनिमम एज फॉर consummating the marriage from 10 to 12, it was greatly opposed by extremist leaders, and one of the early splits between extremists and moderates was on this issue. So 1893 cow riots, 1892, then 1890s this use of festivals, this has increased communalism. Then you'll see ki how the Muslim leadership in 19th century before Sir Syed Ahmad by Deoband Bareli movements and Ahmadiyya was in the hands of Arabic Persian learning Muslims wearing skull caps, having the religious tone and trained on Islamic principles. But by 1890s, there was a crop raised by Sir Syed Ahmad in Aligarh movement, where suit-wearing, English-speaking, law-understanding Muslims took the leadership of Muslims in India. Iqbal writes in his poem, अरू के मुर्दे मशरिक में खूने जिंदगी दौड़ा, समझ सकते नहीं इस राज को सीना और फाराबी। That in the dead veins of East, the blood of life started running. Even Ibn Sina and Farabi, they cannot understand how Indian Muslim got this confidence. It is because of the Aligarh movement of Sir Syed Ahmad. Then came Bengal partition. Bengal partition was clearly divided Indian Hindus and Muslims, especially Bengali Hindu and Muslim, into two. The Muslim majority East Bengali thought now the leadership will come to their post, they'll lead it because they are majority. Hindu Bengalis, they do not wanted to confine to a small western Bengal rather than controlling the entire Bengal in its entirety. Therefore, Bengal partition has further increased the communalism. 1906 formation of Muslim League, demand of separate electorate. 1909 separate electorate increased or introduced, raised the communalism. इसने communalism को अपने pitch पे, it has raised it. There is one more question which we will discuss tomorrow. So by 1909 the communalism reached to a height, and these are the events. This is the 20 years which we have to draw, which we have to understand. इसके सारे event आपको इस आंसर में लिखने हैं. When you read out the question, you will see कि nationalism in lower middle class, a small number of educated Muslims, they also gave leadership. Historians Sir Syed Ahmad Khan played a role. Bal Gangadhar Tilak, extremists started reviving. Beginning of parties seeking popular support. So democracy also increased the communalism. Cow riots 1893. एक सेकेंड. 1893. There are great cow riots on the slaughter of cow. नागरी प्रचारिणी सभा. वो कहा था अंजुमन तहरीक उर्दू. आई गेस दिस इज द नेम, तहरीक उर्दू. व्हाट्स डिफरेंस इन बोथ?
One say that whatever we speak should be written in this script. Others say whatever we speak should be written in this script. अंतर सिर्फ इतना है, ये जो मैं बोल रहा हूं इसको उर्दू भी कह सकते हैं, हिंदी भी कह सकते हैं. काम कठिन है हिंदी है, काम मुश्किल है उर्दू है. We use both interchangeably. The difference is only in the script. That's why Nagari Pracharani Sabha, not Hindi Pracharani Sabha. Now, the partition of Bengal, separate electorate, these all are the issues which increased the communalism to a fever pitch. I leave this at 1920. The reason is that in next question we will pick from 1920s the same graph, and I hope the homework for the next class is that you try to make this graph till 1947. 2014 के बाद मत बनाने लगना, not needed. During 1911-12 there was no event which we can give as a proof of increasing communalism. So communalism remained high but constant. World War I started, this communalism started going down. You will see कि गदर movement of Canada, Canada और also United States in those days तो वीजा पासपोर्ट था भी नहीं, और Canada and US they still have open borders. तो Canada was under British Empire. To protest against British Empire, Canada was not a very conducive place. So they used to take the buses and come to San Francisco. वही western coast से आते हुए San Francisco आ जाते थे. And there they used to raise slogan and tell the world about British misuse of power in India. Or many of them used to take the buses and trains and they return back to Canada. Canada में वो रहते थे. So that's why Los Angeles became a great San Francisco. San Francisco, not Los Angeles. LA नहीं. San Francisco became the great center of Indian revolutionary activities because of the Canadians. फिर वो भी कोमगातू मारू भी एक्सीडेंट हुआ था. Also apart from this all, there was Reshmi Rumal Tehreek, Silk Letter movement, where Afghans and Turks they have promised to help Indian. Although when you will go deep, so it was a religious movement, but they both had common enemy. So the tensions started coming down. Communalism started coming down. Then Tilak came out of jail. Annie Besant was a prime place in Congress. And 1906 Lucknow, 1916 Lucknow Pact, where Congress has accepted the separate electorate. Then World War II, its access, the World War II की excesses थी. And World War I, the excesses of World War I, and then this communalism still came down because they have now common enemy. After this, it was hope of Hindu-Muslim unity raised with Khilafat and non-cooperation movement. So Khilafat and non-cooperation movement, where we are in 1920. An inflection point. We will see how this communalism will inflect from this point. So we have to understand that from 1910 to 1920, how communalism dipped. I am no one to guarantee that each and every Indian started loving each other. सब में प्यार हो गया, ऐसा नहीं है. But on the political front, the communalism, the agenda started dying down or coming down. That's what is the crux of this answer. Tomorrow when we will discuss, or next class when we will discuss this seventh question, the decade of 1920s, which began with the hope of Hindu-Muslim unity. ये जो Hindu-Muslim unity का जो point है, the times will never be same. Within 27 years, we are going to see the blood bath, when man will become the lunatic, will leave all or will lose all our senses. तो ठीक बात है, communalism and hatred is like gravity. All you need is a push.
उसे एक धक्का मिले और ग्रेविटी अपना काम कर देती, यू जंप फ्रॉम द क्लिफ, बस यू नीड अ पुश फ्रॉम द क्लिफ, उसके बाद खुद ग्रेविटी अपना काम कर देती। तो कम्युनलिज्म इज वेरी मच लाइक दैट। बस एक बार आपको पढ़ना है न्यूज में कि वन हिंदू हैज बीटन अ मुस्लिम, जिससे बोला जय श्री राम बोलो, आप वीडियो आपको लगेगा यार। आपने सुना कि वन मुस्लिम हैज बीहेडेड सम, हिंदू छोड़ो ज्यू भी, तो दैट विल टेक यू टू द पाथ ऑफ कम्युनलिज्म। वी ऑल आर कम्युनल इन वन सेंस और द अदर। ठीक है, इट्स जो उसका गन पाउडर है वो हमेशा हमारे अंदर भरा रहता है। ऑल यू नीड इज अ स्पार्क, और स्पार्क देने के लिए तो मीडिया बैठा ही है, मीडिया के हम सभी बैठे हैं, हम एक दूसरे को स्पार्क ही तो देते हैं। तो चलो दैट्स इट, आई एम नॉट टू डिस्कस द प्रेजेंट कंटेक्स्ट, और दिस इज व्हाट द ग्राफ ऑफ कम्युनलिज्म इज। आई होप यू विल मेक इट। आई ऑल्सो होप दैट यू will replicate this or will increase this till 1947 in the 7th question, which we'll discuss in the next class. It's the class of 2.5 hours, so next class will also be of 2.5 hours or maybe of 3. Make sure that जो भी आपको कुछ ना समझ में आए कमेंट करें, तो नेक्स्ट क्लास आएल वो ट्रांसअटलांटिक ट्रेड एंड ऑल दैट। ठीक है, थैंक्स फॉर द क्लास टुडे। ये जो माउस है ना सर इधर है।